गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। हर शाम हम यहाँ कोई ना कोई इवेंट करते हैं, कोई स्पीकर को मद्दू करते हैं और ऐसे मौज़ूआत होते हैं जो आम दिलचस्पी के हों। आज का जो मौजू है वो यकीनन हम सब के लिए दिलचस्पी का बायस है। हर एक पाकिस्तानी परेशान है आजकल कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। लिहाजा ये मौजू रिवाइविंग पाकिस्तान और बैक टू आवर रूट्स। अच्छा, तो जब हमारे स्पीकर अमीन हाशवानी ने ये टाइटल तजवीज़ किया तो मैंने कहा बैक टू आवर रूट्स। अच्छा, तो आज मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, मैं बहुत कुछ जानूंगा। व्हाट आर दोज रूट्स? मुख्तसर सा तारुफ करा लेता हूँ। Amin Hashwani is one of Pakistan's bigger businessmen, has interests in many different areas, but the thing that really is unique about him, वैसे तो देखें बिजनेस बहुत लोग करते हैं, लेकिन इनके दिल में दर्द है for the country that he was born in, and he has done many things. मैंने खुद बहुत कुछ देखा है जो इन्होंने करवाया है कराची में। बेहतर ये होगा कि अमीन खुद ही बताएं उसके बारे में। लेकिन अलावा इसके ही इज़ अ पोएट, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं अंग्रेज़ी में। और आप ये देखते हैं कि जो ग्रुप्स बने हुए हैं जो असर व रसूख रखने वाले हैं, अमीन उसके रुकन हैं। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू शेयर एंड ही इज़ गोइंग टू hopefully stimulate us today with his vision of what needs to be done with Pakistan. So, I mean, it's all over to you. Thank you. So, perhaps you could speak for as long as you like, and then we'll have a conversation. That's and fine. then once we are done, then we'll open up over here. Done. Teek? All right. Thank Okay. you. Thank you everyone for coming. All right. So I was scratching my head what to say, and over here, it's हम सब के दिमाग में है कि पाकिस्तान we have our challenges, etc. मसला ये है कि we know कि क्या problems है, right? Economy में you look at, etc. Even solutions, everyone thinks they know the solution also. आप चाय वाले के पास भी चले जाओ, आपको बता देगा ये है, etc. So I thought, if we know as a nation मसले क्या है, solution भी क्या है, why the hell aren't we doing something about it? It's like reading a self-help book. आप पढ़ लें, एक पढ़ेंगे, दो पढ़ लें, अगर आपकी ज़िंदगी उसमें तब्दील नहीं होती, आप 50 और पढ़ ले, it will make no difference whatsoever, right? So I've actually thought about it and I've completely changed my presentation. What I want to do is be a bit provocative over here and really look at certain core issues. The whole idea is for all of you guys to think about it, challenge some of our assumptions which we take for granted or we hold very dear about, emotively also we attach to it. So I don't expect everyone to agree to what I'm going to say. My objective would be if I can just stir a thought process in all of you. Societies जो होती है ना, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है सवाल पूछना. In my opinion, in Pakistan, we've been asking the wrong questions. If you ask the wrong question, you'll get the wrong answer. There can be multiple truths, quote unquote, to a question. The idea is for society to ask the right questions. And if we start doing that, the answers will formulate, will evolve. And I think as Pervez is, advocates about critical thinking, it's about holding two, let's say, opposing narratives and trying to find the truth in between. We do not do that. We are a very judgmental society. We become a very judgmental society. Tolerance nahi hai for ability to listen
and we want to hold on to our truths and somehow entangle our own egos with those truths. So my attempt today would be actually to maybe overturn the apple carts and see where we go with that. So please bear with me. I want to start with Pakistan. We all know, Asia की century है, and Pakistan was one of the emerging Asian tigers. We know that, and there's this nostalgic hangover in our psyche. What was most significant wasn't that Pakistan was becoming the first Asian tiger. What was most significant was in 1947, we had literally nothing. No institutions, no infrastructure, no finances, and yet within a span of 15 years, we were on a trajectory to become an quote unquote an Asian tiger. And today we have everything in terms of finance, infrastructure, industries, all of that is there. Even political structures, military, all of that. And yet we are failing miserably. And we need to ask ourselves, what were those elements we had in 1947 which we've lost today, despite of having everything? And this is a question to all of us to really contemplate upon, where exactly we actually went wrong. And in that period, it wasn't like a Goldilocks moment. It was actually, we had a lot of challenges in that. And despite of that, we actually went up. We had a war in that. We had dictatorships. We had, Fatma Jinnah and Ayub Khan thing, national identity, constitution crisis. And despite of that, we were on a very steady trajectory. One very interesting thing, we all know PIA was doing very well, and we had the WAPDAs and the PIDC, and we were really progressing. But one thing I came across which was very interesting was that in 1963, Pakistan gave aid to Germany, right? I mean, that is significant, right? And there was projection that Pakistan will become one of the most dominant economies in the next 50 years, because it wasn't not only becoming an Asian tiger, but it had a huge population base. So it will be like Korea or Taiwan 10 times more because of our demographics. So that was the aspiration at that time. And from there, we are where we are today. It's been a spectacular inverted V curve. And I feel it just does not happen randomly. I mean, we made a hell of a lot of effort to ruin ourselves. It does not just happen, randomly happen. And I want to pick a period of the 70s to just make a point. In my opinion, I'm cherry picking a decade where, in my opinion, that was, if I have to pick up, that was the turning point. So early 70s, country breaks into half. And first time, I think, in history mein hua where a majority took from a minority, went off from a minority, right? Half the country goes. Few years later, nationalization, right? So whatever our entire enterprise, industrial base, it gets nationalized. And all of you know exactly what happened subsequently with the nationalization. We had some very good companies, great entrepreneurs, expertise. All of that got ruined with the sledgehammer, I would say. And then by the end of 70s, 1979 was a very, significant year. We are all aware that the Soviet Union invaded, and the whole jihadi culture, etc., started. A couple of other events happened that had a direct implication. 79 was also the Iranian Revolution, and that started the rise of the militant Shia Islam, and that kind of created this insecurity amongst the other monarchies in the Middle East, and the rivalry started. Another significant event happened was the siege of Mecca, 1979.
There again, the whole the royal family had to seek shelter or alliance with the clergies. And this whole Islamization started. So you had Shia and Sunni rivalries, the seeds, 1979. You had the Soviet invasion coming in and the whole jihadi culture going on. And one more thing happened was Zulfikar Ali Bhutto got hanged, 1979. And that was a fine. We had gone through democracy and dictatorships, but hanging a prime minister, and it was a very significant event in our thing. So 1979 was the cusp of this whole decade, where we literally went and towards a part of decline. That's why Pakistan. There is always a time lag. You can always cherry pick certain statistics. Politicians do that. कि हमारे era में बहुत अच्छा था. Then next time आए तो ruin हो गए. There's a time lag, and you can cherry pick statistics to create a certain narrative that supports you or your performance. So in my opinion, the 70s was one era I thought was the turning point for Pakistan, and then the fallback, and then 9/11, etc. All of that happened. So I just want to pick on this 70s period. What I'll do is that I'd like to pick up on certain things that are very widely used in our discussions and debates. Democracy, right? What we do is we oversimplify very complicated issues. We make them into binaries, democracy versus dictatorship. It's a no-brainer, right? And somehow we sprinkle emotions on top of it to make a perfect recipe, so you don't have to think much. Democracy versus dictatorship, we need azadi, and all of that happens, and a hakiki azadi comes on top of that as well. So let's talk about democracy. So Churchill's quotation, the best argument against democracy is a 5-minute conversation with an average voter. All right. We human beings are fundamentally irrational, as we've seen, on multiple times, and we are experiencing it around the world. So just because you have a right to vote, that the wisdom of the crowd shall prevail, these are all theories. In practice, it really does not happen. Look at Socrates, Greece, the foundation of democracy. Socrates spoke about, he was actually not a big fan of democracy, because he gave the analogy that if you have a sweet salesman and a doctor, where sweet salesman says, I'm giving you all the sweets, etc., and the doctor says, I'm going to give you medicine, guess with whom the crowd will go, right? Another analogy he gave about captain of the ship. If you're going on a ship and you need a strong captain, and you tell all the passengers to vote, they will not necessarily choose a captain who is most technically sound. Chances are choose someone who will just play to the crowd. So you need merits for the leader. And ironically, Socrates himself was condemned to death through a democratic process. Right? First they found him guilty, and then a greater majority through a democratic process condemned him to be killed. Right? So Jesus Christ was crucified through a democratic process. So democracy on its own in a vacuum leaves a lot to be desired. And we politicians, we kind of use it for our own narrative. अपनी दुकान चमकाने के लिए करते हैं. Today we're seeing a reverse of democracy. We're seeing demagoguery. USA, Trump, populism. India, in my opinion, is going through a tough time. I've been part of India-Pakistan, this thing, and I feel really sad. I think there's nothing for us to gloat about. It's very sad. We would be looking up to India for its secular and democratic credentials. That, in my opinion, is going into the dustbin. And it's sad to see that. It's a big country, it's a big neighbor. We always aspire to have friendly ties.
Not only it's going through, decline, but there is fascism. Um, in my opinion, I firmly believe that is the case. Populism is a wave. We've seen throughout history populists come in. They will, look at the pains of the populace and just play to the crowd. Eventually, they kind of wane off because the promises that they make they cannot deliver, and eventually the populism. So globally, a populist wave चल रही है. In my opinion, 2 साल, 5 साल, 10 साल में it'll go off. And it was no coincidence that towards the fag end of PTI, its approval rating was like 18%, right? Had this not happened, I think we all know what would have happened to the popularity of PTI. Fascism is completely different. It's actually changing the DNA of a society. You start rewriting the history book. You start to have this sense of superiority as a race versus other races. We had some elements here, thank God we did not go down that route. We still have this populism challenge. We will see how it pans out. So in history, fascism, we saw it last century, it does not go quietly into the sunset. It has consequences. So it really worries me. You start changing the identity of a complete society, it will not go off. So, and the West is playing along with it for be it China rivalry or economic reasons. The less said, the better. The fact that Pakistan was highlighted as one of the countries that does not treat its minority well, while India, there was radio silence. The Secretary of State absolutely refused to condemn India, despite of the reverse. So one can clearly see what is going on over there. Globally, democracy, China model, it's an alternate model. What China has done in like 3 decades when they started, no democracy has ever managed to do that. 700 million people coming out of poverty. So clearly it's unprecedented in human history. So clearly there are other alternate models for progress. And one can always criticize US society, you can criticize China for its lacking. However, the 700 million people to be taken out of poverty and to become a progressive nation and to transform from a communist state to a free market economy. It's not a capitalist economy, but it is a free market economy. That's an incredible achievement, unprecedented in human history. It did not happen under the guise of democracy. Okay. Similarly, Korea, Taiwan went through periods of military dictatorships. They did progress. We went through Ayub Khan. We can condemn military, etc., but there's no denying we went through a whole progress. Musharraf, especially the first 3 years, technocratic government, a lot of indicators clearly showed that we were progressing. Later, whatever happened, that was like different. So hence also Dubai. Dubai is not a democracy. Look how they've transformed over the last 3 decades from just sand to being, one of the leading countries in the world. They've found a niche and they just played for it. So the thing is that, we see this democracy as very oversimplistic. Election mein jaye, vote kare, partiyan lobby kare. In my opinion, democracy starts the day after the election and it ends the day before the elections. That's what democracy should be. It is about we as civil society engaging and keeping our leaders' feet to fire. That unfortunately does not really happen over here. We have a bunch of sweet salesmen who come, promise the heavens to us, and we like idiots, like cannon fodder, just fall for it. What I want to do is be, like I said, I want to be provocative. So I want to actually be critical. So if you look at PTI, for example, NRO की बात, हम NRO नहीं देंगे. Well, the Chaudhrys who were sitting, the alliance partner, were the authors of the NRO.
Similarly, agar NRO, you look at the Malik Riaz incident where you had 170, 180 million pounds that was caught by the British authorities. It was supposed to be confiscated. It comes here and it is given to him on a silver platter. The whole cabinet approves it and he adjusts it against his pending liability. What bigger? That's an unprecedented NRO any individual could have ever got, I think, in the history of the world. Forget about Pakistan. 170 million pounds just given on a silver platter that was confiscated. Another NRO was builders, all these developers, आप ad chat जो आप देखते हैं, this is tax amnesty. Again, NRO. This is NRO कि आप लाएं अपने जितना ब्लैक पैसे हैं आप प्रॉपर्टीज़ में लगाएं एंड आपका सारा का सारा आपका क्लीन हो जाएगा. So to say कि हम NRO नहीं देंगे and हम ये करेंगे and everything, I mean, can't someone see objectively the irony of this whole narrative? And why can't we question that? We don't. We're just following like sheep whatever comes out of our rulers' mouths. Similarly, dynastic politics. Well, if you look at cult politics, is not very different from dynastic politics. You look at the ingredients. It's personality driven. There is a sense of entitlement for a leader or leader's family. So the elements of democracy is about change of leadership. Government change all the time, all over the world. People change, faces change. Why is that we are stuck with Nawaz Sharif, Zardari, Bhutto, Altaf Bhai, Imran Khan? I mean, so dynastic politics or cult politics, in my opinion, has the same ingredients. We don't have any democracy within these political parties. Another thing I want to say is Nawaz Sharif party, right? Nawaz Sharif. I mean, how ridiculous can it be that you have one brother sitting in London calling the shots, one brother the prime minister, the son becoming the chief minister potentially, then he gets thrown out, son this thing, and now the daughter comes from London again and this thing. And of course, Dar, in my opinion, I call him disaster Dar. I don't have any other word to describe him. I mean, he defies gravity, basic laws of economics with his theories. We have gone through his disastrous policies, and now again, so in Pakistan, I think Miftah did an outstanding job. Tough, he bit the bullet, but like in Pakistan, no good deed goes unpunished. Right. So how can Nawaz Sharif talking about हम businessmen है? What are the elements of good business? आप चाचे मामे लाके बैठ जाएं in 230 million people, यही आपको दिख रहे हैं? You can't see anything beyond that. Give me a break. So the point I'm being critical on these parties not because I'm trying to reveal. It's about we being a bunch of idiots as voters, as supporters, right? I mean, we saw MQM. MQM, again, the genesis was to represent urban issues, which the quote-unquote feudals जो parliament में बैठते हैं, उनकी अपने होती है, urban issues नहीं होते. MQM, fantastic platform, right? What did they do with Karachi? I mean, just wreaked havoc in that entire city for decades, for 2 decades, right? So, but no one could see any contradiction, Altaf Bhai, and no one could see what was happening to their own cities, right? You have PPP, Bhutto Zinda hai, right? So Bhutto, one could criticize for a lot of things, but what you could not criticize him was for being corrupt, right? You just have to go to Ladkana to see where those billions of rupees have gone. So again, Bhutto Zinda hai and everyone is voting for that. So the thing is, my point is not to say कि ये बुरे और ये अच्छे हैं. The thing is to really make that sense of realization that what are we? What the hell are we doing? Where is our what roles are we playing? So a good it stayed with me. One of the PTA guys told me Imran Khan went abroad, and wahan, I think it was somewhere in Europe. The guy was criticizing कि आप ये नहीं कर रहे. This is before he became the prime minister. ये नहीं कर. So Imran Khan told him कि if you're so unhappy, why don't you leave the party?
And that guy responded, he said, why don't you leave the party? We are part of the party, and ये एक आपकी aspirations थी, we have joined this party based on this aspiration. Why should we leave the party just because you are diverting from it? This is the kind of activism we should do. So the point I'm trying to make is that if you are a PTI supporter, you're Nawaz Sharif, good luck. Do that. I'm not here to convince. But for God's sake, hold your leaders' feet to fire. And don't be a bunch of idiots getting emotionally driven, etc. So PTI role, let's say, take an example कि हम सबको जेल में डाल देंगे corruption को. Do you know during the 3-year period on Transparency International, Pakistan actually went down below 23 more countries, right? During that 10 year. Has anyone asked कि आप कह रहे जेल में डालो, हम honesty पे आ रहे हैं, आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बता रही है आपके करप्शन तो और भी चला गया है. Has anyone ever asked that question? No. रियासत मदीना, I mean Farah Gogi and Buzdar coming in, how does that fit into the Riyasat Medina aspirations, right? I'm just saying these are questions we don't ask. That's why I'm saying we as a society, our primary responsibility is to ask questions. We don't. We just follow like bunch of sheeps, whatever the narrative is given, because it emotionally makes us feel good. It makes us feel right, and we just go for it. So hence, I think the key I just wanted to make this thing is that democracy for a vibrant democracy, you need guardrails, you need check and balances, you need institution balance of power. That is again another subject, establishment का. Again, selective accountability होती है. कोई पसंद नहीं आया, जेल में डाल दिया. Next time वो आ गया तो उसको जेल से निकाल के आप उसके सारे केस वेस माफ हो जाते हैं. What credibility are you showing to the people that how the rule of law or enforcement of law, right? It's selective. It loses its credibility. Even आपने सही बंदे को भी अगर आपने जेल में डाला है पकड़ के, लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया बाद में, या आपने 10 लोगों में से जो आपकी ऑपोजिट है उसी को आपने जेल में, बाकी को आपने नहीं डाला है, you still lose your credibility, right? So again, establishment hai, I mean, I've always actually argued we don't need to be apologetic about the role of our establishment undue in certain sense, because we've always been in a conflict zone. It's been a rough neighborhood. It has its place. 9/11 ke baad, Pentagon played a very dominant role in US foreign policy. It overruled State Department, White House at times, because we've been in a conflict zone for a very long time. Fine, the establishment will play a dominant role, and that's fine. But each one has to have a balance of things, and there has to be an equity within the society. There has to be. And there again, we do not really, fall for it. Another topic I want to just touch upon is national identity. In my opinion, we have failed to evolve a national identity since its conception. Hence, you have diverse ethnicities that somehow cannot relate to Pakistan. We have tried to, link Islam with Pakistan's identity. In my opinion, that has not worked for a couple of reasons. Number one, when you say Islam, my question is, kiska Islam? Shia ka Islam, Sunni ka Islam, ye sare jo sects hai, uska Islam. Each one has their own interpretations. How can you impose one's interpretation on the rest, even in Islam, if you talk about, right? Similarly, Islam, when you talk about what does it mean? It means ethics, it means values, it means merit, it means equity, it means justice, it means rule of law, right? So हम 40 साल से इधर कर रहे इस्लाम का, ग्राउंड रियलिटी में है एथिक्स, मोरालिटीज, चले रूल ऑफ लॉ, equity in a society, रियासत मदीना के हम बात करते हैं, there's such a disconnect. So Sharia Nizam, etc. So any religious identity, that if you take out the essence of it and just leave it to ceremony, it will invariably be divisive for a society.
So I think first it is very important for us to really look at the elements of, कहते हैं ना, first deserve then desire. Similarly, हम बात करें secularism. Secularism becomes such a bad word. It means, लादीनियत, कि you are anti-religion. That's utter nonsense. It does not mean that at all. I mean, Pervez can, I'm sure, elaborate on that, but it really does not mean that. Also, when you talk about Islam, we are not the only Islamic country in this world. We have Indonesia, Malaysia. They have very nice Islamic countries. How are they evolving? उन्होंने इतना झंडा नहीं उठाया हुआ. रमज़ान में जाए, restaurants खुली हुई है, they are eating. दुबई आप चले जाएं, that's fine. I mean, we don't have to be so insecure about our religion. And so hence, values की आप बात करते हैं, Islamic values. I think Scandinavian countries have practiced far better Islamic values than we do. So again, Islamic Republic of Pakistan has not really panned out. Not because of Islam, religion, it's all of our core identity. But the experiment to make it into a national identity it's not resonated with the public, whether we like it or not. So hence we need to revisit that and stop using for our own motives an identity which is our core identity, but to bring it into an overarching identity, and then how do you accommodate the minorities in the country. So again, one needs to really revisit our thing. Another I hear कि revolution आ जाना चाहिए. अरे बाबा, revolution I mean, you look at revolution, French revolution, पहले आए ग्रुप आया, उन्होंने वो उसके रॉयल्टी के गले काटे. 1-2 साल के बाद जिन्होंने उनके गले काटे, एक और ग्रुप आया, उन्होंने उनके गले काट दिए. Eventually a Napoleon coming in, another emperor Napoleon, another dictator comes in, and the havoc he wreaked throughout Europe with his wars, right? And then Battle of Waterloo eventually brought its culmination. So I'm saying that it really did not pan out very well, the revolution. Similarly, the Bolshevik revolution, जो peasants थे, उन्होंने रॉयल्टी को ओवर टॉपल किया था, एक्सेट्रा. उसी peasants को again खुडे लाइन लगाकर eventually they ended up in labor camps, etc. Eventually at Stalin, who came in, a brutal ruler. Had it not been for Adolf Hitler of last century, I think Stalin would have taken the cup for being the most brutal ruler of the last centuries. Millions of people died under his watch. His own colleagues, because of his paranoia with conspiracy theory, were killed. So I'm saying these revolutions, they look very nice. They're not as nice. So I think, and it's very lazy, intellectually lazy of us to say revolution आया. हमने कुछ नहीं कर रहे, civil society, अब activism तो करें, कुछ नहीं करना है, बस revolution आए हुए, one silver bullet and सब कुछ सही हो जाएगा. Absolute nonsense. Arab Spring happened. Look what the fallout of the Arab Spring. Egypt में you had again another military dictator sitting over there. Eventually did not pan out. Syria का क्या हाल हुआ? Libya का क्या हाल हुआ? Right? I mean, so they all sound very nice slogans, but I think we need to kind of give a deeper thought when you talk about Pakistan में revolution आना चाहिए. For God's sake, I mean, आप सारा दिन आप golf खेल रहे हैं, cigar आप पीते हैं, and then you talk about revolution. Roll up your sleeve, start asking these tough questions to everybody, right? Make people uncomfortable, and you start doing that process and see the change coming maybe over a decade instead of staying cigar peeker aap kehte revolution lana hai. So any country, so I'm a businessman, right? So any country, I view it as a microcosm, as a company. If I have to run a company, aap companies chalate hain. You need the elements of meritocracy in it. You need transparency. You need governance. You need reforms. You have to adapt to the changing environments very, very fast.
In evolution, they said the species that was the strongest or the fastest didn't survive. It was the species that was the most adaptive that survived the changing environment. So we companies also have to adopt very fast to the competition, to changing environment. We need skill sets within our organization. We need a mindset, sincerity, you need teamwork. These are the ingredients that goes on to make an organization culture, right? Pervez, countries का भी culture होता है, right? अगर culture नहीं होगा, जापान था, जर्मनी था, तबाह हो गया था, right? Yet they revived because उनका culture था. So in our country also, if you're going to look at a national thing before looking at slogans of elections and everything, or even solutions, right? We need to get, हमें अपना किबला दुरुस्त करना है as an organization culture of our country. Our culture of our nation has to, these are the ingredients. Management हम कहते हैं, culture eats strategy for breakfast. अगर आपका कल्चर सही नहीं होगा, जो भी आप स्ट्रैटेजी लाएंगे वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे. टीम वर्क नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, मेरिटोक्रेसी नहीं होगी, आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकेंगे. सो इफ यू लुक एट पाकिस्तान एज अ कंपनी, यू लुक एट द ऑर्ग कल्चर, दैट्स वेयर द कोर प्रॉब्लम लाइज. नॉट दिस सोल्यूशन, ये कर दो, ये कर दो. They'll not be able to implement it. They'll not be sustainable. You'll not have the capacity to do it. So first, we need to get a society right. So for me, it is about, it is the economy stupid, Americans. For me, I think it is the society stupid, right? The core is society. If you get your society right, your policies, your politics start coming right. Your policies start coming right, they start to implement. Eventually, your economy also starts to come right, right? Solution हमें पता है क्यों नहीं हो रहा implement, right? It's because our society is pretty warped. We need to go back. And again, I'm saying, okay, I spoke about 1947. उस time पे the one thing we had was we had a sense of unity, sense of purpose. कोई नहीं कहता था कौन पंजाबी है, कौन बलोची है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन पठान है. We were one. And from the ashes, within a span of 15 years, we were becoming the first Asian tiger. Today, we are completely divided. We have toxic politics, divisive society, etc. And remember, countries don't just die, they commit suicide. We've been author of our own ruin. Last articles I was reading of Pervez, we've been the author of our own ruin. We don't need any conspiracy or anyone outside to ruin us. We have, so nations commit. Jared Diamond, you might have read, he reads about how civilizations go up, go down, right? He lists certain elements, how societies decline. You superimpose it on Pakistan or other countries also. You'll see all the elements in it, right? The elite capture we talk about, how short-term self-interest is sacrificed at the altar for long-term societal interest. We can see it over here. Conflicts, etc. So company mein, I look at all of you guys as shareholders, right? Stakeholders. If you people as shareholders are sleeping while your board of your company and the management is wreaking havoc, then you have nobody else to blame but your own self. You people are the owners, co-owners, shareholders. And if you want to be idiots and management एक आपको चूरन, दूसरा कोई और lollipop आपको बेच रहा है, and you're happy with it, then you guys deserve to be where you are as a shareholder of this country. It's that simple. There was one story of someone from India actually told me. His first job was in Hong Kong with another ex-Indian family. He said, I went and I worked there, and one of my first assignment was, it was a trading company. They wanted to buy a ship. They signed a contract with the ship. Okay, within 6 months, you have to arrange the financing, etc., and they will build the ship for you. He signed the contract, etc. The shipping industry crashed. The prices went down, and so he was young, and he said, you know what,
fine, we'll just stay cool about it. 6 महीने गुजर जाएंगे, contract will expire, we are fine with it. So उसका जो owner था, the old guy, he was telling me, he said he called them. He said, क्या कर रहे हो? बोला, I'm sitting pretty, we're okay, we have to do within 6 months, if we don't perform, the cancel gets null and void. So he said, look, he said, there is a legal company, so legally we can be fine with it. Then he said we should be an honest company, not just legal, but an honest company. तो इसने सर वो फाइनेंसिंग नहीं मिल रहे हैं because the markets have crashed, नहीं मिल रहा है. So he said fine, we can still be honest and say कि भाई we tried, bank loans नहीं मिल रहे. But he said we are an ethical company. You go, do whatever you want, we have to put in our equity, we will do that and we'll fulfill this contract. So there's the legal company, the honest company and the ethical company. Similarly, Pakistan ke bhi yahi hai. We need to be an ethical nation. If we're not there, forget about it. I mean, one of my first jobs I started was in the textile industry, right? My business tha. And वहाँ यही था कि हम बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, इस्लाम मना करते हैं, इंश्योरेंस नहीं करेंगे. अच्छा, चलिए ठीक है, सही बात है. उनकी जो करोड़ों रुपए की जो दुकान थी वो सारा ब्लैक के पैसे थे. टैक्स की ज़ीरो. सो टैक्स की चोरी सही है. आप जो यान कपड़े आप सूद पे देते थे कि 3 महीने के उधार पे कि आपने ये प्राइस फिक्स कर दी, वो सही है. दैट वाज ए 3 to 4%, दैट इज सूद, राइट? तो वो सही है बिकॉज दैट्स प्रॉफिटेबल. ब्लैक पैसे रखो, टैक्स नहीं दो, टैक्स की चोरी करो, सेल्स टैक्स की चोरी करो, वो सही है. लेकिन बैंक में अगर आप पैसे रखो तो इस्लाम खतरे में आ गया, राइट? So this is hypocrisy. This is social hypocrisy, and we see in all manifests in every nook and corner. I mean, Panama का जब हुआ था कि oh my God, Panama scandal हुआ, I said, why the hell do we need to go to Panama? Go to DHA. सारा black का है. पैसे क्या है? A friend of mine was buying a property over there. He said, मुझे white पैसे मुझे black करने पड़े because of this thing. अभी उन्होंने minimum rate बढ़ाए हैं, but for the longest time अब I mean, यहाँ चले जाए, these big markets, ये वे, सारा black का चल रहा है, right? So, we need to stay our hypocrisies straight in the eyes and look at ourselves. There will be a reflection of ourselves. As Rumi said, first I was young, I wanted to change the world. Now I'm wise and I'm changing myself, right? Your Naya Pakistan or Purana Pakistan starts from each and every one of us within us. For God's sake, you really start to be the leaders that you are aspiring others to be. We should be the leaders. As they say, one person with courage is a crowd. Okay, where's the crowd? I really do not see the crowd. And there's another thing, we get accused that we're singing to the choir, right? Ye to like-minded hai. The problem is the choir is not singing. That's the problem. It doesn't matter if you have people who do not agree vehemently, fine, no problem. But the people who get in silence of the majority, right? That is the thing. And Martin Luther King in history, evil prevailed not because they were evil people, but because the good remained silent. And that is exactly what we play. The day we use the Socratic method of the scientific critical thinking, which you are a big advocate, anyone talking about any statement, start putting it down, right? Peeling it. Okay, this way. Riyasat-e-Medina, for example, is an example of Bhutto Zinda hai. What does that mean? Ask 4 questions and peel it, and you'll see where you end up. You'll start getting your own answers. Anything that is emotionally stirring you and making you this thing, take a pause. Take an objective view of that thing. Do a very analytical, critical thinking. Use the scientific method. Pervez would use that, right? So the biggest challenge of our times is the memory, the challenge of forgetting our history. I mean, and that in a social media world is very easy. Look at Philippines. Marcos, $12 billion लूट के गया था. $4 billion
आपने उसको रिकवर भी कर दिया, उसका बेटा आज प्रेसिडेंट बन गया। भाई वो कैसा बना? बिकॉज दे चेंज द कंप्लीट नैरेटिव, न्यू जनरेशन, सोशल मीडिया, डिंग डिंग, वेरी हॉलो। दे सेड मार्कोस का was the golden period for us, completely changed, rewrote history. Modi is rewriting India's history today, right? And people are just following it. डेप्थ ही नहीं रही थिंकिंग की। किताबें लोग नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया एक एक सेंटेंस पढ़ा। आई मीन 80% 90% इज फेक न्यूज़, and fake news travels, negative news travels 10 times more than truth. Truth is complicated. You need more in-depth this thing. No one has the time because you want to watch media, social media, Facebook chal raha hai, selfies khich rahi hai, and that is how we are. Anyway, that is not just a Pakistan. So in conclusion, I want to just say that I'm not optimistic about Pakistan, unfortunately. However, I am hopeful. Let me give you reasons for not being optimistic. If you look at the top, let's say 15 socioeconomic indicators of Pakistan last 40 years, 50 years, all of them are in decline. Gender का आप देख लें, I mean, we've really not progressed. We are one of the lowest in the world. Per capita water consumption आप देख लें, आप health, education, compare up कर ले with other countries, right? We are comparatively, the gap is continuously increasing. So if I see this thing कि भाई last 20-25-30 साल में हम decline पे relative to other countries, something has to change or we will continue with this thing, right? And that change, I don't see that happening. So that, therefore, I'm not optimistic. Politicians वो अपनी दुकान चमका रहे हैं, and we like idiots are falling for that. And if someone says conspiracy theories, yeah, and so absolutely. Donald Trump summed it very well. During his first election campaign, he said, if I kill someone on Fifth Avenue, you guys will still vote for me. All right? And they did. They did. He was, at least he was, give the guy credit, he was honest about it. He was blatant about it, because we human beings have this thing, we can rationalize every crime that we commit throughout human history. If you find something which is above Riyasat-e-Medina or Trump saying, make America great again, that's such an enticing thing, we are willing to overlook some of their shortcomings. Okay, so for example, today, if I say, if let's say climate change is very dear to you, I say, I'm going to bring about globally climate change, I'll save the planet. And you say, fine. And if that resonates with you, and if you believe I'm the person who will do it, मेरे में 10 खामियां होगी, you will overlook that. Because you'll say, that is the overarching thing, right? कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए. That is the holy grail. We want that, right? Or Bhutto zinda hai. That's the holy grail. We want that. Okay. Or Mia Saab आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, right? We want that. Mia Saab, जबरदस्त. London से he will descend and everything will be then milk and honey. Institution credibility right now has waned pretty badly, including that of the establishment. Establishment's reaction is of a 20th century. We are sitting in the 21st century. It's a reactive thing. And this is a completely different arena. Polarization in our society has grown. Toxic narratives are happening. And as if things weren't bad enough, we had the biblical floods, where, I mean, just think about it. If it is $30 billion, that's 10% of our GDP has been washed away in a span of a month. Hardly, no country in the world would be able to take this lightly. And it has happened to us at the worst moment possible. Geopolitically, internationally, there is a stagflation, high inflation, low growth, worst time for us. We in a debt crisis, deflationary environment chal raha hai. And IMF plan, there is no Pakistan plan. Where is the Pakistan plan? I don't see any Pakistan plan. Why the hell don't we have a Pakistan plan? We should have had this 30 years ago. We should have implemented it. Yaad naubat nahi aati. I mean, it's shameful that IMF is putting a gun to our thing and we are saying, oh, we're doing this because of IMF.
आप लोगों ने क्या करा? Each and every government has had an opportunity to rule us. What did they do? I mean, even 10% of their claims, Nawaz Sharif bullet train आ जाएगी. I still remember PTI का अगर $200 billion बाहर पड़े हुए हैं, खान आके $100 billion IMF के मुंह पे मारेगा और $100 billion अवाम पे मारेगा. And everyone went, wow, right. Where is that? Why is no one talking about Naya Pakistan? How convenient. Last time we elected PTI on Naya Pakistan, now it's Riyasat-e-Madida, new flavors coming in, right? And we like idiots are just following in droves. I mean, again, we need to, I don't see that Pakistan plan today. So therefore, and also the Black Swan event. Remember, Turkey में earthquake आया है. Karachi is sitting on 3 fault lines. Pervez would know that. It's not a question of if, it's a question of when. And if you thought Turkey's building codes were bad, look at Karachi. Just go in certain slump areas or even go to New Karachi or where you have a middle class population, start looking at that. Or even DHA, if some of the things, they'll not meet to the seismic standards. I would dread to see that day, God forbid, if that happens, right? Black swan events are basically high impact, low probability events. It's not a question of COVID was one of them, a black swan event, right? How the wreckage it created. The politicians knew a pandemic will happen. I still remember seeing Barack Obama, George Bush talking about it, nothing happened, right? So we are in a very vulnerable position. I would dread a black swan event. We are very, very vulnerable. We've lost all our buffers, etc., with an IMF thing. I'm still hopeful. Why I'm hopeful is, let me give you an example. We are not some sub-Saharan African countries that has not seen the day of light, that has seen nothing better. We were potentially an Asian tiger. Remember that, right? We messed up badly. We lost our way. But उनके जरासीम आज भी हमारे सोसाइटी में हैं. I believe that, and I'm happy to have a discussion on that. लेकिन I'm saying the DNA we still have. I mean, even Ziaul Haq, for example, over a decade of Islamization experiment. Ziaul Haq dies, what happens? Benazir comes in. A young girl comes in, sweeps the elections. Where was that? A decade of Islamization. Of course, we still have it, but there was thing. Floods आए थे, again we start uniting as a nation. कोई नहीं देखता कौन शिया, कौन सुन्नी है, कौन पठान है, कौन बलोची है. Everyone unites. Floods आते हैं, earthquake आए थे. We all became one nation. Pakistan is still one of the most philanthropic countries as a percentage of its GDP in the world, right? So we still have those, all of those elements. And जो आज हमारे चैलेंज है 10-15 million dollars का हमारा है, it's chump change for size like Pakistan. It's chump change. जो एशियन टाइगर्स जो हमारे 5-year plans जो कॉपी करके गए तो उनकी 300-400 billion dollars की एक्सपोर्ट है. We are sitting at 20-30 billion dollars. We are hovering. We just need 10-15 billion dollars. I'll give you an example. मुशर्रफ के टाइम पर स्टील मिल प्राइवेटाइज अगर हो जाती, right? I mean, that would have at least given us $2-3 billion of export or import substitution. आपका थर कोल प्रोजेक्ट मुशर्रफ के टाइम पे कंसीव हो गया था. चाइनीज वर डूइंग इट. 4.5 cent पे था, 0.1 cent पे इन्होंने आके झगड़ा करके रोक दिया, ठीक है. And वो आज लग गया होता, आज maybe 25% of our energy would have been on coal at 4.5-5 cents. It would have saved at least $2-3 billion, if not more, every year. Ricodec project again got derailed. कि सही नहीं था, ये नहीं था. आज भी हमने क्या वही आ रहे, ठीक है. Then we had to put in $1 billion equity and we had to pay that $1 billion to one of the partners that walked away. So it wasn't exactly a sweetheart deal that we got even now. If that project would have gone, it would have given us exports of at least $5 billion a year, right? So Musharraf, Amriyat, etc., and you had the judiciary coming in. What an enticing proposition. You had a dictator being booted out,
and you had rule of law, Iftikhar Chaudhry being restored, and you had democracy being this thing. What did Iftikhar Chaudhry do? Steel mill ka privatization, Iftikhar Chaudhry decision. Recordec, Iftikhar Chaudhry decision. All of them got challenged, and we got our ass whipped. $6 billion पेनल्टी हमारे सर पे आ गई थी. ये तो शुक्र है हमने सेटल करके आगे चले, वरना वी वुड हैव बीन बैंकरप्ट ट्वाइस ओवर. सो व्हेन यू लुक, सो इसके लिए मैं कहता हूँ स्लोगन्स पे आप नहीं जाएं, आप ग्राउंड रियलिटीज़ आप देखें, राइट. एंड डेमोक्रेसी आई, आसिफ जरदारी कम्स इन, राइट. स्टील मिल का बेड़ा गर्क हुआ, मुशर्रफ के टाइम इट वाज एक्चुअली प्रॉफिटेबल थिंग. PIA में you had like 5,000 employees with tens of billions of rupees being given to them to restore the employment. We never recovered from that, right? OGDC, what happened to them? So I'm saying, fine, I'm glad PPP came, good luck, but where the hell were we? Why weren't we holding our democratic leaders accountable? We were not. Chief Justice comes, Iftikhar Chaudhry, his son was maligned with Malik Riaz, right? No one ever saw 50 करोड़ पे वो उड़ा रहा था, एंड वो कहता मुझे तो पता ही नहीं था. एंड एवरीवन से हाँ भी चीफ जस्टिस को पता ही नहीं था. घर पे BMW खड़ी हुई थी, कहाँ से आई, निकम्मा बेटा है, एंड BMW खड़ी हुई है, पता ही नहीं है, एंड वी ऑल फाइन विथ इट. दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ आई थिंक. लेकिन डिक्टेटर को हमने निकाला, वी वन, रेवोल्यूशन आ गई, वी गॉट अ रिस्टोर्ड अ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, rule of law has prevailed, Pakistan Zindabad, right? This is the kind of emotive narratives we are happy with, and हमें चूरन बेच रहे हैं, so we will kind of continue with it. Look, even today, if we start, we are in a very difficult corner, but sometimes it's Can you wind up? Yeah, I'm winding up completely now. So Rumi says, the wound is where the light enters you. We are in a very painful state. If we can start bringing the reforms start from the top, in my opinion. Plots जो हमारे हजरात को अलॉट होते हैं, अगर किसको 3 होते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके आप एक प्लॉट ले लें. जिसको 1 होता है आप आधा प्लॉट ले लें. आपकी जो प्रिविलेजेस है वो आप कम करने शुरू करें. आपके जो ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसीज है उसको आप सही करना शुरू करें. आई एम नॉट सीइंग दैट. आई होप दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, so it can have a trickle down effect. Look, there are ills everywhere in the world. India may be here, it's prospering today, but it has still a lot of problems. Our challenge is not to be the best country in the world and just be average. Our agriculture yield up average पे लेकर आ जाए, it's good enough, we will do that. ये हमारी projects, 2-4 projects है, Recordec है, ये start हो जाए, steel mill start हो जाए, power sector का reform कर दे. Yesterday, President Alvi was saying कि आपका population growth rate है 50% is unwanted pregnancies. If you can just tap on that unwanted pregnancies को, we can get a population bomb explosion or a war under control. These are simple things, we can do that. So all I'm saying is that if we get a house right, the challenge which you're facing, we can easily overcome, and we can be on path of, inshallah, Purana Pakistan. Thank you very much. Excellent. Your goal was to provoke people. You have provoked everybody in this audience, but you provoked me. Oh, shit. Oh, my. Look, I agree with a lot of things that you said. I'll tell you what I don't agree with. That's fine. But there are things that you didn't say which need to be said. First of all, this is a country that has been perpetually at war. From the instant that it was born to now. हमने पाकिस्तान बनाने के कुछ ही महीने बाद पहली जंग शुरू कर दी, और अपने जो इधर के कबायली है वो भेज दिए कश्मीर, और उधर पहली जंग शुरू हो गई. उसके बाद 65 की जंग हुई जो हमारी शुरू की हुई थी. लोगों को बताया नहीं जाता इधर के ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था और अयूब खान ने कैसे वो जंग शुरू की. ये दूसरी जंग थी, और फिर कारगिल की जो मुशर्रफ ने की करवाई, और जिसमें हमें मुंह की खानी पड़ी.
تو یہ جو ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے کشمیر کے اوپر، اس نے ہمیں جتنا نقصان پہنچایا ہے اور جس کی وجہ سے فوج ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے اس زمانے سے لے کر آج تک. آخر اگر یہ کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ فوج کہاں ہوتی نا، پھر تو ان کے لیے اتنا بڑا خرچہ ہم نہ دیتے. لیکن وہ کہتے کہ نہیں پہلے ہم کشمیر آزاد کریں گے پھر پاکستان مکمل ہوگا. اور تو اور اب انہوں نے لوگوں کو اتنا پاگل کیا ہوا ہے کہ ان بچوں سے کہا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اسکولوں میں منسٹری آف ایجوکیشن نے 5 فروری کی تیاری کے لیے کہا کہ آپ مضمون لکھیں گے، اور 2 موضوعات دیے گئے تھے. ایک تھا اے منافقو سنو، دوسرا موضوع تھا کافر اور مرتد میں فرق بیان کریں. I mean, are these people mad؟ کہ اس زمانے میں جب نیوکلیئر ویپنز نے اس لائن آف کنٹرول کو پکا کیا ہوا ہے، یہ کیوں ہمیں بدھو بنا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور یہ جب میں کہتا ہوں کہ فوج ہمارے گلے پڑ گئی ہے تو انہی لوگوں نے ہمیں برباد کیا ہے. تو یہ بات آپ نے نہیں کی جو کرنی چاہیے. I would be happy to respond to one of the parts. ٹھیک ہے، That's fine. وہ سو دس واز. اچھا، اس سے پھر بہت سی چیزیں نکلتی ہیں. مذہبی جنون بھڑکانا پڑتا ہے کیونکہ آخر ہمیں کشمیر کیوں فتح کرنا ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور اسلام خطرے میں ہے، اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. تو یہ جو ہمارے اندر جذبات مشتعل کیے جاتے ہیں، ابھارے جاتے ہیں، اس کا انجام یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی تعلیم کو اس قدر برباد کیا ہے کہ اس میں ہر مذہبی مواد اتنا بھر دیا کہ بیچارے بچوں کے پاس کچھ اور پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. ادھر اسلام آباد کے اسکولوں نے سنگل نیشنل کریکولم پڑھانے کی کوشش میں آپ نے مجھے بتایا کہ کمپیوٹر سائنس نکال دیا ہے. لیب کا وقت نہیں ہوتا، سائنس کے لیے وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو اتنی دعائیں یاد کرنی ہوتی ہیں، اتنی حدیثیں، قرآن ترجمے کے ساتھ اور تجوید. جب تک آپ کا عین اور قاف ٹھیک نہیں ہوگا دروازے بند ہیں جنت کے آپ کے لیے. سو دس از دا سارٹ آف تھنگ دیٹ یہ جو نتیجہ. اچھا امین، جو شروع کے زمانے تھے نا وہ اتنے اچھے نہیں تھے. وہ ہمیں اب اچھے لگتے ہیں، لیکن جو لوٹ مار ہوئی تھی، ادھر سے ہندوؤں کو بھگایا، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، ادھر ایسے نہیں ہوا، بہت کم ہوا. یہاں سے تو تقریباً سارے ہندو، سارے سکھ بھاگ گئے نا. ادھر مسلمان 5%، 10% ادھر سے ادھر آئے. انڈیا میں وہ نہیں ہوا تھا جو پاکستان میں ہوا تھا. تو جو شروع کے زمانے تھے، چلو ہماری تو موج ہو گئی نا، ہم نے تو ان کی زمینیں ان پہ قبضہ کر لیا. لیکن کیوں اس وقت پاکستان کی اکانومی اچھی کر رہی تھی، اور جو گراف ہے جیسا کہ آپ نے کہا نا اوپر جا رہا تھا؟ اس لیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جڑ گئے اس وقت، اور جتنا ادھر سے امداد ہمیں ملا، جتنا ہمیں اسلحہ ملا وہاں سے، it was all because we became part of the Cold War against the Soviet Union. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. It was everything was hunky dory and things became way better when the Soviet Union invaded افغانستان. اس کے بعد تو ہماری لاٹری نکل آئی. ادھر تو ڈالر کی بوریاں اوپر سے گرنے لگیں. پھر اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی کہ 9/11 ہوا اور مشرف نے کہا کہ وی آر وتھ یو. اس کے بعد ہماری ادھر جتنا پیسہ آیا اس پر یہ اکانومی چلتی رہی. ہمارے سارے قرضے بھی معاف کر دیے. یہ نہیں کہ ہماری انڈسٹریل پروڈکشن بڑھی تھی، یہ نہیں کہ ہم انسٹیٹیوشنز بہت صحیح چلا رہے تھے. ہاں آج سے ڈیفینیٹلی بہتر ہے. اور آپ کی بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہماری جو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جا رہی تھی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ نیشنلائزیشن سے قبل
یہاں انڈسٹریز بن رہی تھیں, جیسا کہ بٹالہ انجینئرنگ کارپوریشن, بیکو از Exactly. اور پھر ایسا اس کا جسٹ a tenth of what it was in. جو آپ نے نہیں کی کے ساتھ مقابلہ کریں تو آبادی کے لحاظ سے 6 گنے کا فرق ہے. اور لحاظ سے آپ دیکھیں تو کس قدر زیادہ فرق ہے. دوسری طرف ادھر جو ڈفرنس آر 100 پہ ایکچولی یہ آپ ڈال اقلیت ایک طرف کر دیا تو آگے اسرائیل ہو, انڈیا, چائنا, امریکہ, واٹس دا ڈفرنس؟ کچھ ہے نا. سو واٹ یو سیڈ واز ایکچولی ویری امپورٹنٹ دیٹ اٹس آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل ہاف اسرائیل مگر سارے عربوں کو ایسے وہ اپنا کام دماغ سے لیتے ہیں اور مسلمان اب اس قابل نہیں رہا. ہاں 9 through the 13th centuries جب ایک دوسرا دور تھا, معتزلہ کا دور تھا, جو عقل کو مانتے تھے صرف ایمان کو نہیں, تو وہ سوچ سائنس دکھائی نہیں دیتی. there is nothing in Pakistan. آپ نے کی, اور اب میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اسٹیٹ اینڈ فیملی میں سے اگر کسی ایک چیز کو چوز کرنا پڑے تو ہمیں کس چیز کو زیادہ پریورٹی دینی چاہیے, اسٹیٹ کو یا فیملی کو؟ یہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈائلما ہے جسے نہ ہمارے ٹیچرس کلیئر کرتے ہیں, نہ ہمارے پیرنٹس کلیئر کرتے ہیں, اور ہم اس کنفیوژن میں ہی رہتے ہیں. تو یہ آپ اس پہ تھوڑا سا اپنا اوپینین دے دیجیے. فیملی اور اسٹیٹ کے بیچ میں کیا جھگڑا ہے, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سر یہ میرے مائنڈ میں کنفیوژن اس وقت آئی تھی کہ میں ایک سیشن اٹینڈ کر رہی تھی, 5-6 بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے ایک کولیگ نے میرے دوست نے ایک کویشچن کیا ان سے یہی کہ واٹ کمز فرسٹ, اسٹیٹ اینڈ فیملی. تو وہ کنفیوز ہو گئے, ان لوگوں سے ڈھنگ سے جواب نہیں ان کو دینا آیا. تو مجھے یہ چیز بڑی ہی پریشان کی کہ
کیوں ہم لوگوں نے اسٹیٹ کو اور فیملی کو بالکل ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے. مطلب کہ ان کی شکلیں دیکھ کر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ فیملی کو ہی پریورٹی دیتے ہیں. تو نیشنلزم کی جو کمی ہے ہمارے اندر, شاید یہی یہ بھی ایک وجہ ہے ہماری اس پستی کی. تو اس چیز پہ تھوڑا سا آپ اپنا اوپینین دیں تاکہ مطلب ایک رائے آپ کی بھی مل جائے اس چیز کے بارے میں. اچھا, لیکن میں پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خاندان اور ریاست پاکستان کے بیچ میں کیا جھگڑا ہے؟ سر یہ بات میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جیسے کہ پریورٹیز جو ہیں فیملی اورینٹڈ اس قدر ہو چکے ہیں کہ اسٹیٹ کے لیے ہماری وہ پریورٹیز ہی نہیں ہیں. اسی وجہ سے تو ہماری جو کرپشن کی روٹ ہے شاید یہ بھی اسی کے ساتھ لیں گے. اگر ہم فیملی کو ایز اے پارٹ آف اسٹیٹ کنسیڈر کریں تو اگر ہم اسٹیٹ کو پہلی پریورٹی دیں تو شاید ہم فیملی کو بھی اتنی ورتھ دیں کہ وہ اسٹیٹ کو اسی طرح سرو کرے کیونکہ اسٹیٹ فرسٹ ہے. اچھا, تو آپ کا مطلب شاید یہ ہے کہ ہم اچھے شہری کیوں نہیں ہیں؟ یس سر. اچھا, تو اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ اچھا پاکستانی اس کے ہونے کے لیے آپ کو اچھا مسلمان ہونا پڑتا. اچھا مسلمان کیا ہے اس کی تشریح نہیں کی گئی ہے. صرف وہ جو رسم و رواج کا پابند ہے اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں, لیکن وہ جو اوروں کا خیال رکھتا ہے, جو اوروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, ان کا تحفظ کرتا ہے, اس پر ہمارا زور نہیں ہے. تو جس قسم کی تعلیم ہمارے اسکولوں میں دی جاتی ہے اس میں جو شہری کے فرائض ہیں کہ ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے اور ریاست کے فرائض ہیں اس کو بیان نہیں کیا جاتا. I don't know if you have نہیں صحیح. تو آئی تھنک دیکھیے اسٹیٹ اینڈ فیملی یا پرسنل کے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. ایز دی امیریکن سے اٹس ناٹ اے زیرو سم گیم. کہ اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنی امی کو زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابو کو زیادہ پیار کرتے ہیں, رائٹ؟ اٹس اے ویری آکورڈ سچویشن. آپ کہیں گے دونوں کو. وہ کنپلیٹ نہیں بنا سوال میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو وہ صحیح قبول نہیں ہوا. اس سوال میں مجھے مسئلہ اس سوال کو تھوڑا سا بہت چلیے ٹھیک ہے. آئی تھنک ٹائم کم ہے تھوڑا سا. دیٹس فائن. Thank you very much, sir. Very insightful discussion. Now, sir, my question is, why is nobody talking about the collective diminished intellect in Pakistan? آپ میڈیا کو اگر ہم لوگ اٹھا لیں, when we see our whenever any time I sit in front of the television, I get appalled by what we are showing as a country, as a nation. There is nothing which is being discussed that is of intellect. Tentis aapke probably news channels and everything, but what is the content? So ایک تو جو collective intellect پاکستان کا میرے حساب سے زمین پہ پڑا ہوا ہے. There is nothing. There is no collective intellect. اسلام آباد موسٹلی یہاں پر لوگ پڑھے لکھے ہیں بیکاز اٹس فیڈرل کیپٹل, یہاں پہ ہیڈ آفیسز سارے کچھ ہیں. اس سب کے باوجود آپ یہاں کی بھی کمیونٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں, یو وڈ ناٹ فائنڈ دا کلیکٹیو انٹلیکٹ. سیکنڈلی سر, وائی لبرلزم اور وائی لیفٹزم, اینڈ بائی لیفٹ جو لیفٹ آئی ایم ناٹ سینگ روٹی کپڑا مکان, وائی دیٹ فیل ٹو گین اینی گراؤنڈ ان پاکستان؟ Pervez, you want to have a go and then I want to respond. Okay. But I think I should give you the chance first. So first of all, media کا جو آپ بات کر رہے ہیں, it's a global phenomena, right? It's a thing کہ like I said, depth ختم ہو رہی ہے ہماری انٹلیکٹ کی. جب ڈیپتھ کی بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا سب فون پہ چل رہے ہیں, ٹک 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 فیس بک چل رہا ہے. اٹس اے ویری سپرفیشل تھنگ, رائٹ؟ فیک نیوز چلتی ہے, پاس آن ہو رہا ہے, یہ وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے, رائٹ؟ سو پاکستان میں بھی دا پرابلم از کہ میں میڈیا والوں سے بھی بات کرتا ہوں. آئی سیڈ what the hell, بھئی ہمارا مسئلہ ہیلتھ کا ہے, ایجوکیشن کا ہے, اکانومی کا ہے. آپ لوگ سارا دن لگے ہوئے کہ وہ سرٹن پولیٹیشین نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا, وہ بندہ باتھ روم میں جا رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے. نان سینس, اٹر نان سینس. آپ بٹھا رہے ایک پولیٹیشین کو, دوسرے پارٹی کو وہ بتائے, وہ کہہ رہا ہمارا تو لیڈر چاند سے آیا ہے, کوئی کہتا ہمارا لیڈر دودھ کا جو دھلا ہوا ہے. نان سینس. I've been in some of these now, of course I refuse to go, but یہ جو کتے بلیوں کے ان لوگ یہ جو جھگڑے کرتے ہیں بریکس میں آپ دیکھو تو یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. So the point is, میڈیا والے کا ایشو یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جھگڑا نہیں ہوتا ہے, ہماری ریٹنگ نہیں بڑھتی ہے.
میں ادھر آ جاؤں پرویز صاحب کو آپ بلا لیں ان کو کہیں آپ نیوکلیئر فزکس کی بات کریں یا یہ کریں آپ کی ریٹنگ یوں چلی جائے گی. ان سے آپ کہیں کہ ایجوکیشن کی بات کریں وہ میڈیا کہتا ہے ہماری ریٹنگ چلی جائے ہمارے ایڈورٹائز میں ویورشپ. دا پرابلم از سوسائٹی کا. اوکے the media will react to society. So if the society starts valuing health, valuing education, automatically you will demand to see programs of that thing. People are valuing garbage, right? So you will get garbage in, garbage out. And Pakistan is not unique, duniya mein bhi ye hota hai. Please go ahead. May I comment on this particular part? Or do you have something to I will. دیکھیں میں ان کی بات سے تو اتفاق کروں گا کہ ہاں میڈیا میں یہ خرابی ہے لیکن یہی خرابی آپ کو اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی ملتا ہے. تو ادھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کوئی آپ کی یونیورسٹیوں میں کوئی سیمینار ہوتے ہیں, کوئی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ ڈسکشنز پر پابندی ہوتی ہے. آپ وہاں آزادی فکر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, گو کہ یونیورسٹی ہوتی ہی ہے اس کام کے لیے, لیکن نہیں. آپ اگر پروفیسروں کے گھروں میں جائیں تو ادھر آپ کو کتابیں نہیں ملیں گی. ہاں بہت شاندار گاڑی کھڑی ہوگی ادھر, ان کا بہت بڑا مکان ہوگا. اور اس کے برعکس اگر آپ انڈیا جائیں تو انڈیا میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر, ایک فل پروفیسر جو ہوگا وہ ایک فلیٹ میں رہ رہا ہوگا. یہاں اس کو عالی شان مکان ملا ہوا ہے. تو یہاں انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کی بات آتی ہے. تو جو بات میں نے کہی نا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے کلچر کے اندر لکھنا پڑھنا, تعلیم اور تخلیق اس کو کوئی بہت اچھی چیز نہیں سمجھا گیا. تو تاریخی وجوہات تو اس کی ہیں لیکن اس کو ہم بدل سکتے ہیں. اور یہ نہیں کہ سارے مسلمان ملک ایک جیسے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایران میں بہت لکھنا پڑھنا ہوتا ہے, ان کی یونیورسٹیاں فعال ہیں. ادھر مثال کے طور پہ آپ کسی بھی شعبے میں جائیں, میتھمیٹکس سے لے کے بایولوجی, ہسٹری, پوئٹری وغیرہ, ہر چیز ہر جگہ آپ کو وہاں کچھ نہ کچھ ملے گا, بہت بعض دفعہ اچھا بھی ملے گا. سو آئی ول بلیم culture on this and agree with you on that. Yeah, okay. Fine. سر ہاشوانی صاحب آپ کی بڑی تھاٹ پرووکنگ باتیں تھیں. اس میں تھوڑی سی وہی جیسے ہود بھائی نے کچھ ڈس ایگریمنٹ کیا. پاکستان شروع سے قرضے کی بیساکھیوں کے اوپر ہے. شروع سے ہی پاکستان کبھی ورلڈ فوڈ ایڈ سے ایڈ مل رہی ہے, یو این سے. میں تو اس کا چھوٹا تھا اور سارا ہسٹری میں نے پڑھی ہوئی ہے پاکستان کی. ملٹری دوروں میں, ڈکٹیٹرز کے دوروں میں پاکستان کو ہیوج امداد ملتی رہی ہے. اب نہیں مل رہی ہے, اس وجہ سے حالات برے لگ رہے ہیں. اس وقت ہمیشہ چاہے ایوب خان لے لیں, چاہے ضیاء الحق لے لیں, افغان وار پہ ایڈ ملتی رہی ہے پاکستان کو, چاہے مشرف لے لیں. فارن ایڈ پاکستان کو, امریکن ایڈ آتی رہی ہے ویپنز کی فارم میں. اب نہیں آ رہی, اب خرچہ ادھر جا رہا ہے. اصل میں ہم نے 2 نان پروڈکٹیو ڈپارٹمنٹس کھول رکھے ہیں, ایک فوج اور دوسرا بیوروکریسی. کرتے کچھ بھی نہیں ہے, وائٹ ایلیفینٹ ہے, ہم انہیں کھلائے جا رہے ہیں, اپنی اکانومی میں سے کھلائے جا رہے ہیں, اور وہ نان پروڈکٹیو ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر وہ ٹھیک کر لیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو. Okay, so can I respond to this thing? Couple of things. I do not agree and it's fine. So میں نے اسٹارٹ میں یہی کہا تھا کہ آئی تھنک کہ ڈیفینس کو آپ ختم کرتے یو کانٹ. آئی مین وہاں ایک فیشس ادھر اکراس دا بارڈر ایک گورنمنٹ بن رہی ہے. آپ کا ہندوتا ہے نا یہ, وہ دیکھیں اس میں پاکستان کا نقشہ ان کے ساتھ ہے. کشمیر کا ایشو نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ارے بابا خرچہ ہے, بٹ وی نیڈ, ایوری کنٹری نیڈز دا ڈیفینسو کیپیبلٹی, right? Otherwise you will be subject to coercive diplomacy. Take it from me, for 12 years I was part of India-Pakistan thing. I've been part of track 2. ایک پہ میں آپ سے پاکستان کی آپ نے خود کہا ہے پاکستان سے الگ ہوگی.
पाकिस्तान से अलग हो गए। yeah, but that Mike. आपने खुद कहा उस वक्त नजरिया पाकिस्तान फेल हो गया। अरे बाबा, पाकिस्तान की अग्रीड वो देखिए, इंडिया पाकिस्तान की अगर आप बात करें, मुशर्रफ की आप बात करते हैं, कारगिल उसने ऑथर किया था, पर वही मुशर्रफ ने यूनिलैटरली यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से ही सेड वी आर मूविंग अवे फ्रॉम इट, लेट्स टॉक पीस. ओके, he was not only the president, he was the chief of army staff, and he took consent from all the corps commanders. Okay, so अगर कश्मीर में ही आर्मी की अगर दुकान चमकनी तो आर्मी कहता भी नहीं करना है. I went to Delhi, मैं आज बता रहा हूँ, I met counterpart, I can't take names, कि why is there radio silence from India side? There was no reciprocity. I said, here's a person, a military guy, कि 60 साल में उसने इतना ज़बरदस्त मूव किया है कि भाई फॉर पीस वी आर मूविंग अवे फ्रॉम यूएन रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर. देयर इज़ रेडियो साइलेंस फ्रॉम इंडिया साइड. I can't say it publicly what the response was, but it was not very positive, number one. Number two, Musharraf towards the end came up with a resolution on Kashmir with Manmohan Singh. Borders will not be redrawn. Borders will become meaningless. All right, trade from both sides of Kashmir will happen. And ultimately, whatever the solution for Kashmir will be with the consent of the people of Kashmir. ठीक है? तो अगर या आर्मी का होता है उनको अपनी दुकान चपकानी, वो पीस नहीं करते इंडिया के साथ, वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसकी, आप दैट्स अ सेपरेट थिंग. आई एम जस्ट सेइंग कि आर्मी इज़ नॉट वन यूनिफाइड थॉट प्रोसेस. उसमें भी इंसान है, हम जैसे है, अलग अलग सोच होती है, और ये उनकी सिंग नहीं है, वो हमारी सोसाइटी से ही आते हैं, राइट? So anyway, this is a separate. I mean, So you'll have some hawkish people, you'll have some doves also within the establishment, and that's fine. अच्छा देखिए, I too was part of track 2. तो मैं आपको भी कुछ उस हवाले से बता सकता हूँ, लेकिन जो एक बात आपने की ना कि मुशर्रफ ने ये कह दिया कि हाँ अब हम प्लेबिसिट पर इसरार नहीं करेंगे, वी कैन डू विदाउट प्लेबिसिट एंड लेट दीज बी सॉफ्ट बॉर्डर्स, और फिर किसी वक्त ये हल हो जाएगा. ये बात तो उसने कह दी, और कहीं एक आध अखबार में ये बात छपी, बट इट वाज नॉट ब्रॉडकास्ट ऑन पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान. जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल, उन्होंने इस बात को कभी नहीं कबूल किया. मुशर्रफ जो कहे सो कहे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ये बात नहीं मानी कि प्लेबिसिट को परे कर दिया जाए. सो दिस इज नॉट राइट. वी हैव, आज भी देखें, हर 5 फरवरी को हम मुल्क बंद कर देते हैं. हम बच्चों से ये ऊट पटांग बातें करवा लेते हैं, ए मुनाफिको सुनो. क्या इनका दिमाग खराब है कि ये समझते हैं कि ये बातें कर कर के कश्मीर हमारा हो जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल. और तो और 70,000 जानें हमने ज़ाया की इन जंगजुओं को यहाँ असलहे से लेस करके. यहाँ जिहादी तंजीमें नुक्कड़ कोने पर बैठी हुई थीं, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, जमातुद दावा, ये हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह वगैरह, ये सारे पाकिस्तान में होते थे, दंदनाते फिरते थे. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, 2005 की बात है, ज़लज़ला आया था. मैं अपने स्टूडेंट्स को ले गया था रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, उन जगहों पर, और ये देखा कि बावजूद इसके कि हमने कहा कि मुशर्रफ ने 2002 में ये कहा था कि अब हम कोई जिहादी तंजीमें यहाँ नहीं रख रहे, हमने बस सीख लिया अपना सबक, अब हम ये जिहाद शहाद से परे हो गए. 2005 में जब ज़लज़ला आया और मैं अपने स्टूडेंट्स को वहाँ ले गया, तो देखा कि जगह जगह ये न सिर्फ मौजूद हैं, इनके 8 व्हीलर ट्रक्स हैं, उनके ऊपर मशीन गनें लगी हुई हैं, उनके हस्पताल हैं, और हस्पताल जहाँ फौजियों का इलाज हो रहा था. अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताऊं, मुशर्रफ ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया था. मुझे इसलिए बुलाया कि मैं आई वॉज द पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव फॉर पगवॉश,
पगवाश एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पीस और इन चीज़ों पे, और हमने एक कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस कराई थी। तो उधर से इंडियन कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के जो लीडरान थे मुसलमान वो आए थे, इधर के लीडर थे, पगवाश के उनका अपना इंटरनेशनल ग्रुप भी था। और उधर जब मुशर्रफ ने ये तकरीर की कि हमने अब ये अमन का दौर आ गया, अब यहाँ कोई जिहाद नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर मैंने हाथ अपना खड़ा किया, मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम देयर एंड आई मस्ट टेल यू व्हाट आई हैव सीन। और फिर मैंने बताया जो अभी मैंने आपको बताया कि आई हैव सीन दोज ट्रक्स, आई हैव सीन दोज जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस openly advertising themselves, and if I have seen them, can't the rest of the world see them? उनको जो गुस्सा आया मुशर्रफ को, उसने कहा डॉक्टर हुडबॉय, यू आर ट्राइंग टू पुट अ राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल। फिर उल्टा हो गया, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, आगे पीछे 3-4 दफा इस तब, एंड ही गॉट मोर फ्रस्ट्रेटेड द मोर टाइम्स ही ट्राइड। उसके नतीजे में ही हैड बाद में मेरी प्रमोशन ब्लॉक करवा दी, मुझे डीन लगाना था लम्स में, वो ब्लॉक हो गया, सब कुछ। आई डोंट केयर, आई डिडंट वांट टू बी डीन एनीवे। लेकिन देखें ये जो है ना मुनाफिकत इतनी भरी हुई है एस्टैब्लिशमेंट में। एक तरफ तो हमने जिहादी पाले यहाँ, और अभी जाके ये हाफिज सईद को बंद किया। पहले तो हम कहते थे कि ये तो फरिश्ता, पहले तो इसकी इतनी आओ भगत होती थी इस मुल्क में कि he was one of the most powerful people in the country, और अब उसको 30 साल के लिए अंदर बंद कर दिया। I mean, we have been lying and lying and lying, and so why shouldn't India be really, really upset at us? I can respond to that, but yeah, fine. So factually, what you're saying is correct. Nations play games. They play games, we play games, absolutely. So what you're saying is correct. I mean, I cannot this thing. वहाँ भी games खेलते हैं, यहाँ भी games खेली जाती है, and this is the deep states. इधर नहीं, अमेरिका भी game खेलता है, invade करता है. Every country plays this thing. Unfortunately, deep state is a heartless endeavor, and human lives do not matter. हमारे 70,000 लोग मारे गए, हमारे शहरों में बम के धमाके हुए, वो सारे जिहादी फिर हमारे अपने ही गले पड़ गए। Anyway, let's move on. Next question. Sir, I have a question. आपने बोला कि there is a social hypocrisy and I totally agree with that. लेकिन उसके पीछे अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो there is a social stratification कि एक तो बिल्कुल डेली वेजर्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो हमारी एलीट क्लास है। तो अगर हमें सोशल कोहेजन चाहिए तो अगर डेली वेजर तो रोड्स पे आके या इस तरह अपने डिमांड्स नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इधर आ जाएगा तो उसकी तो दिहाड़ी जो है वो ज़ाया हो जाएगी और उसका तो चलता ही उस पे है, और हमारी जो एलीट है वो आती नहीं है इस पेज पे। तो आप बता सकते हैं कि ये सोशल कोहेजन किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं कि हम अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को जो है वो एक साथ अचीव कर सकें? हाँ, सो दो चीज़ें, एक होती है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सोसाइटी में सिंस ह्यूमन हिस्ट्री हमेशा रही है, सब एक जैसे नहीं होते। व्हाट यू नीड इज़ एक्विटी, कि एवरीवन शुड गेट अ फेयर चांस। ओके, एक्विटी हैज़ टू, दैट इज़ द रूट कॉज, राइट। एक्विटी होना चाहिए कि स्कूल एजुकेशन हर बच्चे का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई राइट ऑफ एजुकेशन है, मिलती है नहीं मिलती है, क्वालिटी मिलती है, जिसको मिलती है वो भी गार्बेज क्वालिटी मिलती है, राइट। इसीलिए मुल्क का ये हाल हुआ है, इसीलिए फिर वो डेली वेजेस पे जाते, उसके बच्चे भी डेली वेजेस पे ही जाएंगे क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है। इट्स अ वेरी विशियस साइकिल। सो इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी, आप समझे कि एलीट कैप्चर होता है, सही है। एलीट भी अलग अलग किस्म के, एक होता है रेंट सीकर होता है कि वो इकॉनमी से चूसता है, राइट, और इकॉनमी। एक होता है बिल गेट्स है जो एलीट है, उसने वैल्यू क्रिएशन की है, इकॉनमी बेहतर होती है। तो अमीर होना गुनाह नहीं है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ इन इस्लाम इज़ एक्चुअली इनकरेज्ड, मसला नहीं है। हाउ यू क्रिएट योर वेल्थ इज़ द प्रॉब्लम, इज़ द क्वेश्चन, and how you contribute to the society while you're creating wealth
is the real question to ask, right? तो ये जो डेली वेज अर्नर, ये इसको अगर इक्विटी, वही मैं कहता हूँ कि सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म चाहिए. आप समझते हैं कि अगर मैं रेंट सीकर हूँ, एलीट हूँ, आप समझते हैं आउट ऑफ गुडनेस ऑफ माई हार्ट मैं कुछ करूँगा? बिल्कुल नहीं. इट्स एन एलीट कैप्चर. ठीक है, इसको फिर हम जस्टिफाई करते हैं. मिडल ईस्ट में आई वाज इन्वॉल्व्ड इन इजरायलीज एंड अरब्स का, राइट? It was after 9/11. So we did many. There was a Jewish professor. He said, "You guys are wasting your time." I said, "Why?" Because we can solve these issues. These are not this thing. कुरान में नहीं लिखा है, उसका गला काटो, या उनके किताब में नहीं लिखा है. We can solve this. And he said, "It's elite capture." History में जब भी elite ने resources पकड़ लिए हैं, वो कभी भी out of the goodness कभी भी नहीं छोड़ेगा. राइट? इसराइल ने अगर पैलेस्टीन का लैंड पकड़ लिया, उनकी पानी पकड़ लिया है, जो भी आप पीस डील का जितनी आप बात करें वो नहीं छोड़ना है. सेटलमेंट्स आ गई है, वो यू कैन नेवर कॉल देम ऑक्यूपायर्स. इट्स ऑक्यूपाइड लैंड, पर यू डेयर नॉट कॉल देम BBC, CNN कभी उनको कहेंगे सेटलर्स. क्यों कहेंगे सेटलर्स? क्योंकि अमेरिकन्स वर आल्सो सेटलर्स. They are occupiers, they're occupying land. You dare not say that, otherwise you'll be crucified. Okay? तो ये elite capture है हमारा mind भी. मेन चीज़ है सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म. दैट इज द की, वी हैव टू डू इट. आपने स्टार्ट करना है. अगर आप विलेज में रह रहे हैं, आपके बच्चे हैं, उसको एजुकेशन सही नहीं मिल रही, आप जाएं, 100 पेरेंट जाएं उधर जाके धरना दें. ठीक है, इधर तो हम धरने के लिए तैयार होते हैं, आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए धरना दें. आपको सही नहीं मिल रही, आप जाएं, मीडिया को बुलाएं, 500 लोग हॉस्पिटल के सामने खड़ा कर दे. आपके जो एरिया के MNA MP के घर पे जाएं, बोले आपके ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 5 करोड़ पे मुझे हिसाब किताब दें. डू वी डू दैट? नो, वी डोंट डू दैट, राइट? तो देन इफ आई मैंने मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ मिल रहा है, मैं कहूँ ठीक है, मैं थोड़ा खर्च करूंगा, अपनी भी अयाशी करूंगा, बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. सिविल सोसाइटी हैज़ टू डू इट. वी आर नॉट डूइंग इट. इवन इसराइल में उनका लॉ चेंज हो रहा था, लाखों लोग स्ट्रीट पे आ गए एक्टिव. इराक जब जैसे इन्वेड हो रहा था, स्ट्रीट पे कौन गया? अमेरिकन्स गए, यूरोपियंस गए, लाखों लोग स्ट्रीट पे आए के डोंट इन्वेड इराक. हमारे यहाँ क्या था? कुछ नहीं था, आराम से बैठे हुए थे मुसलमान कंट्रीज में, राइट? यू नीड अ वेरी वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी. वी डोंट हैव इट. वी आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. इफ यू डोंट डू इट, we are condemning ourselves to be ruled by the elite. Okay. Thank you so much for the insightful session. I just had a question for Pervez Saab. So for someone who is on the managerial as well as the educationist side of running a school, how do you suggest to, inculcate the qualities of, critical thinking or love for intellect? Because I personally run a school and I have to, complete the syllabus and look after all the administrative tasks while, wanting to do those things, but I'm unable to do so because of lack of time and other constraints. You also have to look after your business interests and everything. So do you have any suggestions specifically? Ooh, that's a hugely difficult question. I would love a volunteer in the audience. Would you like to, or Amina, would you like to? How to? See, they are required to teach from certain books. They are required to teach from the curriculum, and then most of all, their children are required to answer those questions which depend entirely on rote memorization, and critical thinking is not checked over there. I know the consequence of that. The consequence is that you have zombies coming out, and then they are unemployable, which is why the difference between India and Pakistan has grown so much. If you look at the kind of questions that are asked in examinations in India, compare them with our board exams, there is a difference of जो कहते हैं ना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है in terms of what is required from them. Comprehension, to be able to construct, to be able to write essays, paragraphs, to be able to solve problems which they've not seen before in physics, math, chemistry, biology, etc. तो अब आप you're fighting with your hands tied behind your back. ये मसला है आपका. आप मैट्रिक या O levels किसकी बात कर रही हैं? आप O levels करते हैं, मैट्रिक का है? No, it's basically from preschool up till metric, and it's basically our target is lower socio-economic class. Like it's very
because then you also have teachers who you also have to teach, on how to teach. So there is a lot of challenges, but I still, make sure to implement a few things that I can do. For example, making sure that the students are writing like creative writing topics on their own and stuff. But like this is a huge challenge that I face, and I want to do those things, but I have some like financial balance and So everything. one specific suggestion: bring all your kids to the center over here. ऊपर जाए lab में ये. Pervez, We would love to have your there you go. children. चलो, I've We- just brokered a yes. deal between both of you. Yeah. Good. There you go. देखिए, अच्छा, by the way, देखिए, आप मुझे दावत दें, मैं आपके स्कूल आ जाऊंगा. Okay. there you go. Sir. Just one thing, I'm not a huge fan of our schooling system irrespective. آپ کلاس 1 کے بچوں کو پوچھو کہ بھی کتنے آرٹسٹ ہیں, سب بچے ہاتھ اٹھائیں گے. کلاس 9 کے بچوں کو پوچھو, کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. رائٹ, وی کل کریٹیوٹی بیکاز آر اسکولنگ سسٹم از گیئرڈ ٹورڈز دی انڈسٹریل ایج کے لیے ہے. آج یو نیڈ کریٹیوٹی. کریٹیوٹی از آؤٹ آف دا باکس تھنگس, رائٹ. سو میک یور چلڈرن ڈو کریزی تھنگس. اسٹارٹ تو ان کا مائنڈ تھوڑا کھلے گا تو کریٹیوٹی آئے گی, کریٹیکل تھنکنگ آئے گی. آف کورس سائنس پڑھانا ضروری ہے, لیکن اپارٹ فرام دیٹ ڈو ون کریزی سبجیکٹ ایوری ڈے سو دے اسٹارٹ breaking the rules, breaking the laws, asking uncomfortable questions, right? And that is human curiosity. They'll ask these uncomfortable. Start with that, open their minds. That's all. So, thank you for such a thought-provoking discussion. I just want to touch on the culture wala point again because that really fascinated me. In my mind, identity is inherently rooted with culture. And I think that goes with like all the examples that we discussed. Like the US has a very defined identity of like being built on liberty and happiness and all of that. And Israel has a very defined sense of identity where Jewish people see themselves as problem solvers of the world. Like that's something that they teach to their students bachpan se. So I feel like one of the biggest issues that we have with our culture is that we don't have an identity because of our tumultuous past. We've been through a lot and we all kind of know the reasons behind it. But I just want to know if you think that in the next 10 years we have an opportunity to reconcile our identity crisis. Yeah. So, dekhiye, آئیڈینٹی ہونا بہت ضروری ہے, رائٹ. سو یو برنگ ان ڈائیورس ایتھنیسٹی بیک گراؤنڈ, ان کے اپنے سب کلچرز ہوتے ہیں, ایک اوور آرچنگ آئیڈینٹی دیٹ برنگز دیم, یونائٹ دیم ٹوگیدر. ہم نے ٹرائی کیا اسلام, رائٹ. سو اسلام از اے کور آئیڈینٹی, لیکن اس کو ہم نے ایز اے نیشنل آئیڈینٹی بنایا. دیٹ ایکسپیریمنٹ ڈڈ ناٹ سکسیڈ, آلرائٹ. دیٹس ون تھنگ. ناٹ اونلی ڈڈنٹ سکسیڈ ان پاکستان, اب سعودی عربیہ میں آج آپ دیکھیں وہ بھی ریفارم کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو. ایم بی ایس ہے, وی کین بی کریٹیکل آن سرٹن ایز ویل, لیکن ایک کام اس میں بالکل صحیح کر رہا ہے کہ اپنی سوسائٹی کو کھول رہا ہے. بیکاز آپ وہ تھیولوجیکل آپ ایک بنانا چاہ رہے ہیں نا آئیڈینٹی, وہ جیل نہیں ہوگی ان ماڈرن ورلڈ. آپ کی سوسائٹی پروگریس نہیں کر سکے گی, رائٹ. سو آئی ایم سیئنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو, سو یہاں سیکولرزم کو تو بہت برا ورڈ بن گیا ہے, حالانکہ بیکاز آپ پلورلسٹک سم آئیڈینٹی آپ فارم کریں, رائٹ, جس میں بلوچی ول آلسو سے کہ ٹھیک ہے, اینڈ اٹ کانٹ بی لیٹس اے کوٹ اینڈ کوٹ پنجاب ڈومینیٹڈ. اٹ ہیز ٹو کم فرام آل سیکٹرز. کلیکٹیو آئیڈینٹی آنی چاہیے, اینڈ دیٹ از ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو ویئر بلوچی فیلز آئی ایم اے پاکستانی, اے پٹھان فیلز آئی ایم اے پاکستانی, اے مہاجر فیلز, ایوری ون فیلز کہ آئی ایم پاکستانی, رائٹ. جھنڈے لہرانا, نیشنل ڈے, وہ ٹھیک ہے, ہم سب ہے پاکستانی, لیکن یو نیڈ دیٹ کوہیسو آئیڈینٹی, اینڈ دیٹ کم تھرو سرٹن ویلیوز. اینڈ یہ ہپوکریسی آپ نے ختم کرنی ہے. آپ کہہ رہے کچھ اور ہے, اینڈ اب میں اگر سگریٹ پی رہا ہوں اور میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوں بھی سگریٹ نہیں پیو, وہ میرا بیٹا ہوگا تو وہ سگریٹ پیے گا, because he look at my deeds rather than my words, right? So we need to walk the talk, automatically evolve ہوگی. This is my 2 cents. میں تھوڑا سا بس اس میں اضافہ کروں گا. بڑا اہم سوال ہے, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام ہماری ایک پہچان ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ سارے مسلمان ہوں. ہندو کو بھی اور سکھ اور عیسائی کو بھی اتنا ہی پاکستانی سمجھنا چاہیے, بلکہ وہ ہے. جو ہندو ادھر رہتا ہے وہ مسلمانوں سے پہلے ادھر تھا, وہ کیوں نہ سمجھے کہ وہ اس دھرتی کا ہے.
अब क्या पाकिस्तानी को कैसे आप डिफाइन करेंगे, उसकी आइडेंटिटी क्या है, मेरे नज़दीक ये कोई बहुत ज़्यादा अहम सवाल नहीं है. हम जहाँ पर हैं हम उधर ही के हैं. एक बाड़ बनाई गई है जिसके अंदर हमें रहना, जो जोग्राफियाई हदूद हैं उससे हम बाहर नहीं निकल सकते, लिहाजा हम समझ लें कि एक ही जेल में रहते हैं. अब जो जेल में रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे को फिर जान लेंगे ना. एज लॉन्ग एज वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एंड वी आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. देखें मसलन इधर ब्लैक होल में कोई पठान आता, कोई सिंधी आता, कोई बलोच आता, कोई कहीं से पंजाबी बहुत होते हैं, तो डू वी नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर? वी डू. हम कर सकते हैं, हम करते हैं. आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी आइडेंटिटी बन रही है, बिकॉज वी आर वॉचिंग द सेम टीवी प्रोग्राम्स, रीडिंग द सेम बुक्स एंड all that, just living together, which is why we are not Irani, which is why we are not Afghan. So it'll come. Don't worry. Just last comment, I'm personally against. I think ये जो nation state structure है ना, ये outdated हो गया है. If we should be globalized citizens, right? India में जाता था, I would feel very much at home over there, right? So I would have opposing, एक extremist versus moderate. इंडिया में पाकिस्तान में है. So moderates on both sides should try and be as cohesive rather than उसका झंडा इंडिया का, उसका झंडा पाकिस्तान का, तो we should be, that's nonsense, right? So we need to become globalized citizen, and mindset इसमें थोड़ी सी change करनी पड़ेगी. It is going to happen. I just have a follow-up question. Like, do you see us divorcing ourselves from our religious identity anytime soon? We should not. We should not. Religion is our core identity. It's our individual identity. It's a family identity. कौन से आप सेक्ट से हैं, सब आइडेंटिटीज है. It's core. We should never, ever. Why? So we should not. No, we should not devoid ourselves of our core religious identity. But उसको आप national identity आप नहीं बनाएं. We have multiple identities. I am a family person. मेरी एक identity है. मेरी माँ है. एज ए फैमिली मैं हूँ. मैं बिजनेस में जानता हूँ, मेरी एक बिजनेस आइडेंटिटी है. मैं अगर आई से माई प्रेयर्स, मेरी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है. वी हैव मल्टीपल आइडेंटिटी एंड वी शुड बी फाइन. इफ आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम दिस थिंग, right? So we have multiple identities and it's fine to have. We are multi-dimensional human beings and we should be absolutely comfortable with it. But I mean, I think the only thing is core. That's what I was saying. Doesn't have to be at the core. It is one of your identity. So that is again individual choice. Individual choice. अच्छा. अब there are थोड़ा सा आगे भी आन. No, we're running out of time. I have a flight to catch. You know, the title is Back to Our Roots. Now roots वो होती है जहाँ से उसको वो nourishment मिलती है और वो दरख्त तवाना होता है. So can you tell me, जब कायद-ए-आज़म was struggling for a separate homeland, what was his idea of just to be separate from the Hindus? And वो जैसे आपने कहा वो फिर जेल तो बाद में बनी कि हम सब इसमें रह रहे हैं, तो उनके जहन में क्या आइडेंटिटी थी? या he passed away too early and we didn't have any second line of पॉलिटिशियंस जैसे इंडिया को मिल गए पटेल और दूसरे लोग, और हमारे पास कोई नहीं थे, और ब्यूरोक्रेसी और वो लियाकत को हमने उनको मार दिया और फिर and so on. So what was his, so where are the roots? So just to answer that, I suggest you read Mr. Hoodbhoy's book that is coming out. It's an outstanding book. I'm here to publicize. मुझे commission दे देना. So outstanding book. It's a research-based book. When is that being published? Next month. My suggestion is you guys should do a session with Mr. Hoodbhoy here, Dr. Hoodbhoy, on this particular question. And I think I attended a talk which he delivered on the book. I was blown away. It's outstanding, this thing. Maybe you should do a talk about your book. This kind of question will be answered. Solid research-based. It cleared a lot of cobwebs in my head and perceptions जो मेरी थी, जो मैं सरसरी history में पढ़ता था. Through thorough research, he's going to again topple a few apple carts.
What's the It's title? called Pakistan Origins, Identity and Future. तो ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी, उसके लिए बहुत वक्त चाहिए. You need at least 1 hour for that answer. Sir, please. I can give the answer in 5 minutes, but we don't have 5 minutes. So, Thank you, sir. Thank you, Amin Bhai, for a very elaborate, objective and candid talk. Thank you. And I think one could not disagree with any of the points that you mentioned. Thank you. But if your permission, Pervez Sahab, if I can make a couple of comments only. Sure. One, I think हमारे अपने अंदर बहुत से contradictions हैं. We all want change, लेकिन जब हम इस कमरे से निकलेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल पे हम नहीं रुकेंगे. लेकिन we're looking for a leadership जो तब्दीली लाएगी. वो तब्दीली कैसे आ सकती है? और मैं हर रोज़ ये फेस करता हूँ डे इन डे आउट यंग लोगों को. मैं इस एज ग्रुप में हूँ, मेरे मतलब आई हैव गॉट ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड आई ट्राई टू स्पीक टू द पीपल कि यार लुक, मैं भी बहुत सी गलतियाँ करता हूँ, लेकिन यू गाइस लुकिंग फॉर अ चेंज. और आप आए दिन सामने खड़े होते हैं इशारा तोड़ के, रॉन्ग साइड पे आके, और आपने झंडा चेंज का उठाया होता. दैट्स वन पॉइंट. नंबर 2, कॉन्ट्रडिक्शन में सर हर एक को राइट है वो अपना रिलीजन चूज़ करे और सबको इकट्ठे रहने का भी है इस्लाम में. बट इफ़ यू वांट टू बी कॉल्ड एज अ मुस्लिम्स देन बी अ मुस्लिम. आप ये कॉन्ट्रडिक्शन में कहाँ फंसे हुए हैं आप, कि जो आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आप कोई जनाजा पढ़वाएं, निकाह पढ़वाएं. कौन कह रहा है आपको पढ़वाएं, ना पढ़वाएं, लेकिन आप चाहते वही हैं. फिर आप एक बंदे को, मौलवी को पकड़ के ला के स्टेज पे बिठा देते, फिर कहते जी मौलवी बुरे हैं. भाई आपने उसको स्टेज पे तो आपने खुद बिठाया ना. आप अपने बच्चे का निकाह पढ़वा लें, आप अपने पेरेंट्स का खुद जनाजा पढ़ा लें, आप इमामत करवा लें, ठीक है. आप बताइए कि कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं. तो आई थिंक जो भी आप जिस चीज़ पे भी आप बिलीव कर रहे हैं, जो आपने कहा कोर वैल्यूज़ हैं या वन ऑफ द वैल्यूज़ हैं, जैसे भी आप कह लें, इफ़ आई वांट टू बी कॉल्ड एज अ मुस्लिम तो आई शुड बिकम अ मुस्लिम. बट इफ़ आई डोंट बिकम अ मुस्लिम एंड देन कंप्लेन कि जी मुसलमानों का ये हो रहा है, भाई इस्लाम में क्या प्रॉब्लम है, मुसलमानों में तो है, कुछ मेरे अंदर बहुत खामी है. दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन. तीसरी बात ये है सर कि जब जो आपने बात बड़ी अच्छी कही है पार्टीज़ के बारे में, हमने पोजीशन ले ली हुई है. अगर मैं किसी पार्टी को डिस्कस नहीं कर रहा, अगर मैंने एक पोजीशन ले ली, जो मेरा आए दिन ये मसला होता है महफिलों में, गुफ्तगू में, कि जब आप कोई ऑब्जेक्टिवली बात करना चाहें तो सीनियर पीपल हैव टेकन अ पोजीशन, और वो पोजीशन अपनी पार्टी की पोजीशन है. आप देख रहे हैं कि उसमें कि भाई ये अगर आपने कोई एक स्लोगन लिया है और उसकी वो चीज़ अगेंस्ट जा रही है, तो हैव पब्लिकली मैं नहीं कह रहा, बट हैव द हार्ट टू क्वेश्चन योर लीडरशिप कि सर आप ये कह रहे थे, ऐसा है तो नहीं. वो नहीं हो पा रहा. जब वो नहीं हो पा रहा, उनको बिल्कुल फ्री हैंड मिला हुआ है. 2-4 स्लोगन डेवलप करो और उस स्लोगन के पीछे आवाम लगी हुई है, उनको भी आसानी है क्योंकि करना कुछ है नहीं, आपने स्लोगन के पीछे लगना है. लेकिन इफ़ यू कीप आस्किंग देम कि मुझे डिलीवरेंस बताएं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्लोगन्स, मुझे डिलीवरेंस बताएं. अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फिर तो सही बात है, अगर मिली है तो उसके अंदर डिलीवरेंस बताएं. एक चीज़ सर लास्ट थिंग बस मैं ये कहना चाह रहा था, जो ऑप्टिमिज्म की आपने बात की है, आई थिंक वन हैज़ टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बट एक चीज़ है रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म. रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म में तो होता है कि भाई आप कहेंगे बस हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता. होने के लिए आपको यू हैव टू हैव अ प्लान, यू हैव टू हैव अ थिंकिंग. वो रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, सिर्फ ऑप्टिमिस्ट होना काफ़ी नहीं. थैंक यू सर. Can I just very quickly, please go ahead. Should we move on? Okay. Amina had. Amina, आपको जी go ahead. वो असल में actually I just wanted to answer your question about schooling. I think the most important thing is having a school library, making your children into readers, and not just books. Of course they should read books, but as Amin said, bring them to places like this, expose them to different opinions, and then take them to literature festivals, take them to bookshops, to seminars, call people into your school to talk to your children, and ask them to to process the information that they have acquired and form their own opinions, rather than depend on received wisdom. Yeah.
Thank you. Thank you. I think that's a very good very addition. good. Yeah. असल में मेरी जो सवाल है, मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट होने तक गवर्नमेंट स्कूलों से रिलेटेड है, तकरीबन यूनिवर्सिटी तक मैंने गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा है. जो मसला मैंने फेस किया है, जब मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने अपने आप को देखा कि मैं ख़ुद ग्रेजुएशन के बाद एक इंतहा पसंद बन के मैं बाहर आ गया था. उसमें मेरे फैमिली, मेरे कल्चर, मेरे कम्युनिटी का कोई हाथ नहीं था, सिवाय जो नसाब में पढ़ के आया था. उसमें मुझे, जब मैंने देखा कि मुझे मरने से, जीने से ज़्यादा मरने का दर्स मिला था. वाह. मुझे जीने से ज़्यादा मरने का दर्स मिला था. वो अलग बात है कि मैं अपने आप को किस तरह उस दंगल से निकाला, उसके लिए कितनी मेहनत पड़ा, वो अलग बहस है. लेकिन मसला ये है कि इस वक्त हर स्टूडेंट को जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जब कहते हैं कि जो भी कश्मीर डे पे बच्चों को मिला, अब ये हमारे निसाब का भी हिस्सा है. अब निसाब जो डिज़ाइन करता है वो हमारे स्टेट डिज़ाइन करती है, उसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट का रोल है. तो वो उनको ऐसे लोग चाहिए जो इस तरह की ज़हनियत के हो, जो जीने से ज़्यादा मरने पे बिलीव करते हो. तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब स्टेट ही नहीं चाहती है, वो इस मसले में संजीदा ही नहीं है कि वो एक इंटेलेक्चुअल और एक महज़ब, एक नॉर्मल शहरी पैदा करे, उसने अपना निसाब को ही इतना एक्सट्रीमिस्ट रखा है कि वहाँ पे हर दूसरा बच्चा, अब देखेंगे, अब सर्वे करेंगे, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं अक्सर इस चीज़ पे लिखता भी हूँ, सर्वे भी करता हूँ, लेकिन वो बात पर वहीं आकर रुकती है कि भाई एक स्टेट ही वो खुद आपको, आपके बच्चों को, जो न्यू जनरेशन है उसको इंतहा पसंद बनाने पे तुली हुई है, तो इसको कौन ठीक करेगा? और रही बात सवाल की, आप कहते हैं कि मैं सवाल करो. अमीन साहब, मैं अमीन साहब को कराची से जानता हूँ. हम सवाल करते हैं, लेकिन अगर सवाल करेंगे भी तो किससे करें? अगर आज सवाल करते हैं, अगले दिन हमारा आता पता ही नहीं रहता है, तो सवाल हम किससे करें? अच्छा, सो इसमें मैं जल्दी से एक दो ज़रा रिस्पॉन्ड कर दूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सवाल मैं बहुत क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी करता हूँ, लेकिन मैं सबसे काम भी करता हूँ. एंड द रीज़न इज़, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम जस्ट सेइंग. मैं जब क्रिटिसाइज़ करता हूँ ना, मैं एक, आई डोंट डू इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ के बाकी को नहीं, के सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, मैं सबको करता हूँ क्रिटिसाइज़. हर पॉलिटिकल पार्टी को करता हूँ, हर इस्टेब्लिशमेंट को भी करते हैं. आई वर्क विथ ऑल ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स. द की इज़ के यहाँ जो क्रिटिसिज्म होती है, एक तो या नेगेटिव क्रिटिसिज्म होती है, एक होती सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म होती है कि आपने पीटीआई का एजेंडा आप आगे जा रहे कि उसके खिलाफ कर रहे, या पीपल्स पार्टी का एजेंडा कर रहे, या एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा, यू लूज योर क्रेडिबिलिटी. यू हैव टू बी क्रिटिकल एंड सपोर्टिव of all the stakeholders simultaneously, hold both of these truths in parallel. Okay? जिसका जो सच है, जो पाकिस्तान के लिए सही काम करे वो ही आप उसको करे, जो गलत करे उसी बंदे को आपने क्रिटिसाइज भी करना है. दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. आपने ये फॉलो करना है, सिंपल फॉर्मूला है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फॉलो करें. आपके जो अपोनेंट्स भी होंगे ना, इवेंचुअली दे विल रियलाइज कि यार इस बंदे का कोई एजेंडा नहीं है. मेरा जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी पार्टी इज पाकिस्तान, माई पॉलिटिकल पार्टी इज पाकिस्तान. ठीक है ना? जो एनी वन हु इज वर्किंग, पीपल्स पार्टी को भी मैं बहुत क्रिटिसाइज करूँ, बट आई वर्क वेरी क्लोजली विद. देयर आर वेरी ऑनेस्ट मिनिस्टर्स in People's Party, they're very honest secretaries. I work with them, very dedicated. This thing, वो ये सब चोर है, ये गए नहीं. You can't do it broad brushes. Establishment, I work with this thing. My experience has been different than Mr. Hoodbhoy's, right? So I said there are many different competing voices. आपका काम है कि जो भी within wheels जो अच्छे लोग होंगे, political party, establishment, anyway, उनके साथ आप पार्टनरशिप करें, उनको स्ट्रेंथन करें, कुछ काम बेहतर हो जाए. आई विश आई कुड गिव यू स्पेसिफिक, बट दिस इज रियली has been my experience and it's been very successful. I'm still here. No one is saying that I'm anti-Pakistan or yeva. I've been critical of the establishment also, and I've told them on the face, and they've been very accommodating, more than the political parties. That's a separate subject. लेकिन जो बात ये मेरा experience है. जो बात इन्होंने की ना कि स्कूल में, yeah, that is terrible. That's terrible. He became an extremist. Wow. अब उसका अंजाम ये कि टीटीपी को छूट मिली हुई है,
Exactly. वो पुलिस के अंदर घुसे हुए हैं, वो फौज के अंदर घुसे हुए हैं. ये जो पिशावर में मस्जिद में 80-90-100 पुलिस वाले मारे गए, शहीद हुए, वो कैसे हुआ कि अंदर की खबर, अंदर के लोग उस वक्त मौजूद थे, बारूद उनके ज़रिए से पहुंचाया गया. और जो यहाँ इंतहा पसंदीदे हैं, इंतहा पसंदी दहशतगर्दी में यूं तब्दील हो जाती है. अब जो उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया उसका खमियाजा वो खुद भुगत रहे हैं. आज पाकिस्तान डूब रहा है सिर्फ इसलिए नहीं कि IMF ने हमें गर्दन से पकड़ा और हम बिल्कुल खाली हो गए, ख़जाना खाली हो, लेकिन ये कि जो दहशतगर्दी है इसने हमें बर्बाद कर दिया और ये हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी. बिल्कुल ठीक कहा आप. Nations commit suicide, they don't die. मैं हमेशा कहता हूँ. मैंने आपसे कहना ये था कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारा डीप स्टेट है, वो उसकी मतलब उसकी प्लानिंग होती है सिर्फ मेरा अगले 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए. मतलब जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो मुजाहरे शुरू करवा देंगे, मुल्क तबाह कर देंगे. ठीक है, तो मतलब वो 10 दिन से ज़्यादा देखते नहीं है कभी. तो हम इसको किस तरह से ठीक करें कि यार कि वो भी थोड़ा सा लंबा सोचा करें कि मतलब कुछ भी होगा तो वो मुजाहरे करवा देंगे, PTS से मुजाहरे करवाएंगे, नून लीग से मुजाहरे करवाएंगे, TLP से मुजाहरे करवाएंगे, और फिर उन मुजाहरों की वजह से बिजनेसमैन भाग जाता है और हर बंदा मतलब मुल्क छोड़ के भाग जाता है ज़रूर, जो मतलब लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकता है. तो मतलब वो अपने छोटी छोटी हरकतों की वजह से हमारा बिलियंस का हमारे मतलब हर वक्त नुकसान करवा दे रहते हैं. और दूसरा ये बताएगा कि किस तरह से हम आपने बात बहुत अच्छी की थी पहले कि मतलब हम हमारे लिए इस्लाम सिर्फ यही रह गया हुआ है कि यार पैसे बैंक में ना रखो, ये सूद है, या हराम वही है जो कि हराम जानवर ना खाओ. उसके अलावा हम झूठ बोलने में सबसे नंबर 1 पे हैं. ठीक है, तो हम एक बड़ी मुनाफिक सोसाइटी है. तो किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं कि यार हम अपनी मुनाफिक को ख़त्म करें, क्योंकि मुसलमान एक मतलब ठीक है, मुसलमान अगर बहुत से गलत काम कर सकते हैं लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हम झूठ बोलते हैं. बाकी छोटे का बुराइयाँ से बचते हैं लेकिन झूठ सबसे ज़्यादा बोलते हैं. तो हम किस तरह से इसको सही कर सकते हैं? सो आई थिंक स्कूलिंग से होगा. देखिए इस्लाम में हुकूकुल इबाद, हुकूक अल्लाह, राइट, हुकूकुल इबाद इज़ अ डिस्प्रोपोर्शनेटली एम्फेसिस किया गया है कि टू सर्व ह्यूमैनिटी, राइट, टू बी अ गुड फंडामेंटली ह्यूमन बीइंग. विमेंस राइट की आप बात करें, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन, राइट. यहाँ अगर आपको सेरेमनी में आपको कर दिया ये कर दिया आप जन्नत में जाएंगे, तो कि ये छोड़ो भाड़ में जाओ ये. हालांकि इफ़ यू रीड योर ओन रिलीजन, योर ओन ट्रेडिशन, इट हैज़ अनड्यू एम्फेसिस ऑन दीज थिंग्स कि अगर उसमें आप करेंगे खुदा आपको माफ़ नहीं करेगा. आप किसी के हक खाओगे, माफ़ नहीं करेगा. द अलमाइटी गॉड विल नॉट. नमाज नहीं पढ़ोगे, चले ही इज़ मोस्ट बेनिफिशिएंट मर्सीफुल, वो आपको माफ़ कर देगा. इतना बड़ा एम्फेसिस किया गया है, राइट. पर हम फॉलो नहीं करते. इट्स ऑल ओवर नाउ. इट कम्स फ्रॉम स्कूल बुक्स, इट कम्स फ्रॉम आपकी घर में क्या हो रहा है आपका, राइट. वैल्यू सिस्टम है, आपके पेरेंट्स ने सिखाया नहीं सिखाया, राइट. दैट इज़ ऑल्सो नॉट ओनली स्कूल, बट यू हैव टू लुक एट आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी. सो दिस इज़ अ कोहेसिव थिंग. सोसाइटी में वैल्यूज़ आने चाहिए, वेदर इट कम्स थ्रू, लाइक आई सेड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज are better Muslims than we are. They're following these values much better than we are, right? So this is again, therefore I'm saying this is a societal issue. It's not an economic issue, it's not a political issue. Core mein it's a societal issue. You can do it through school reforms, you can do it through ghar mein aap sahi karaएं, whatever. It's all of the above. So, please go. आखिरी 2 सवाल लेते हैं, ये इंटरनेट के हैं जी. इसके बाद हमें ख़त्म करना होगा क्योंकि 2 घंटे हो गए. हाँ, I have a flight. I'm going to miss my flight. Very quickly, please. बहुत जल्दी. ये सेशन जो है हमारे तमाम दूसरे सेशंस की तरह द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पे लाइव भी जा रहा है. तो हमारे पास बहुत से ऑनलाइन हमारे दोस्त हैं. वक्त की किल्लत है, मैं बिल्कुल मुख्तसर 1-2 क्वेश्चंस रखता हूँ उनकी नुमाइंदगी के लिए. अमाद ख़ान जो है वो जो पाकिस्तान में लीडरशिप के हवाले से कहतो रजाल है, उसका जो है वो अलमिया उजागर कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ये क्यों है या इससे हम कैसे निकल सकते हैं. उसी ज़िमन में आतिफ शहजाद का ये कहना है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उससे हमें नए चेहरे पॉलिटिकल सिस्टम में मिल सकते हैं. एक तो ये क्वेश्चन है. सो लीडरशिप तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि लीडरशिप हैज़ टू कम फ्रॉम यू, विद इन यू. आप लीडर हैं, किसने आपको रोका लीडर नहीं बनने के लिए? जब अब्दुल सत्तार ईदी अंगूठा छाप created the world's largest ambulance fleet,
آپ साले पढ़े लिखे हैं, आप प्रिविलेज होंगे, آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کس نے آپ کو روکا ہوا بھائی؟ لیڈر آپ بنے. دیٹس لیزی کہ ہم بیٹھ کے بولے کہ یہ عمران خان آئے گا یا زرداری آئے گا, نواز شریف آئے گا یا کوئی آرمی جنرل آئے گا, رائٹ؟ دیٹس وی آر بینگ لیزی. لیڈر آپ ہیں, ہم سب لیڈر ہیں. وی ہیو ٹو بیکم. اسی طرح سوسائٹی بنتی ہے. لائک ایز اے ون پرسن وتھ کریج از اے کراؤڈ. ڈاکٹر عبدالحمید نیئر ہیں وتھ اے ویری کریٹیکل کوشچنز. وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو لیفٹ این امپریشن دیٹ ڈیموکریسی از ناٹ ورکنگ ان پاکستان اینڈ یو ہیو ناٹ ایسوسیٹڈ اینی تھنگ نیگیٹو وتھ ملٹری ڈکٹیٹرشپس. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آر یو سجیسٹنگ دیٹ پاکستان شوڈ ریمین انڈر ملٹری ڈکٹیٹرشپ and that it is the only way to take the country forward? So again, let me quote Churchill. He said, "Democracy is the worst form of governance until you start looking at the alternatives." Right? My point was, democracy is not perfect, and کہ آپ نے جا کے ووٹ دے دیا and پھر آپ جا کے بیٹھ جائیں and پھر آپ criticize کرتے رہے. Right? Democracy is about participation of the civil society. Right? Hold our leaders accountable. That was my point. It's a very fragile system. America میں اچھی established democracy بھی derail ہو رہی ہے. Right? I'm not advocating کہ آپ dictatorship میں جائیں. You have to look at democracy. یہ جو آپ کے democracy جو آپ کو چورن بیچتے ہیں نا, اس پہ آپ نہیں جائیں. آپ اپنا عقل استعمال کریں. Think in a much more broader. It doesn't mean کہ آپ dictatorship پہ جائیں. You are just looking at کہ you have an active civil society participation. Local body, provincial government, national election. Therefore, I said democracy starts the day after your election day. And it ends the day your election is voting hoti hai. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. God bless.